Thank you everyone for joining. In the post-lunch session, we will start our discussion with the practitioners from these specific organizations. Joy sir started Urmul, the Rural Health Development Trust, as a mainstream NGO working toward the social and economic changes in the life of people. And in between the Urmul Trust as an umbrella organization. Then encompasses several family organizations working towards the length and breadth of the sandy rigid area, which is the Thar Desert, which is Bikaner, from where I belong, and I feel really connected to the to all the views Sumita ma'am also shared. उसके बाद उर्मुल के स्टार्ट करने के अंदर उन सर ने उसके बाद स्टार्ट किया है, उन्होंने चरखा स्टार्ट किया। चरखा को उन्होंने इस विजन के साथ स्टार्ट किया कि जो मीडिया के अंदर जितने भी मतलब उनके इसका सिंपल उनका पॉइंट ये था कि जो उनका गोल था कि स्पिनिंग द एक्शन इनटू द वर्ल्ड, उसे लेके उन्होंने चरखा स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने अवार्ड जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है रूरल सेक्टर के अंदर जो वर्क कर रही है, उनके साथ वॉलंटरीली एजेंट की तरह वर्क किया क्योंकि वो विलेज स्वराज को प्रमोट करना चाहते थे। उर्मुल जो है उसके अंदर उर्मुल सेतु एंड उर्मुल समिति। उर्मुल सेतु जो है वो मिटिगेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और लाइवलीहुड सिस्टम के लिए वर्क कर रहे हैं, और जो उर्मुल सीमांत है जो फोकस कर रहे हैं चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजिंग कलेक्टिव एक्शंस ऑफ द वुमेन, और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स है वो इन्हीं बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्क कर रहे हैं। नाउ आई वुड लाइक टू and then they have also worked for the desert research center जो अभी उर्मुल ने 2016 में ही स्टैब्लिश किया है, जो अभी जो बहुत सारे वेरियस लैंड्स पे लाइफ एंड लिविंग इश्यूज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। Now we have members of these organizations with us, so I would like we will moving forward towards the session. I would like to request Prerna ma'am, who is a coordinator at Urmul, to coordinate with us within the session and coordinate with us for the session. And we also have Mr. Ramesh Saran, who is the secretary at Urmul Trust, Ms. Sushila Ojha, the chairperson Urmul Seemant Samiti, Mr. Sunil Lahiri, who is the secretary at Urmul Seemant Samiti, then Anshul Ojha sir, principal anchor Desert Research Center. We have Dipti Priya ma'am from Charkha. We have Sunil sir and Arif sir from AVARD Northeast. Prerna ma'am, please. Thank you so much, Renu. Hello, everyone. Hello, Sumita ma'am. Thank you for calling us and inviting us to this platform. Just to introduce, I have with me our colleagues and my seniors, Mr. Ramesh Saran. He is secretary at Urmul Trust, and he is also one of the people who has been involved and associated with Urmul for a very, very long time and very closely worked with Sanjoy ji. We also have Rameshwar ji from Urmul Setu. He is secretary at Urmul Setu, and his journey has also been very closely related. And also Purna Ramji, he is one of the initial members who joined Urmul and Sanjoy ji and Arvind ji's team. I also have Mr. Sunil Lahiri here, who is the secretary at Urmul Seemant Samiti today, and Anshul Ojha, he is principal anchor at Desert Resource Center. So it's Urmul, we have representation here from various Urmul network organizations. Urmul, if we go back, as Renu gave a small gist, Urmul was envisioned by Sanjoy ji in 1984, and the idea was to work on various aspects of rural development, especially health and education. Those were the sectors which were extremely backward at that point of time in this space, in this region, in the Western Rajasthan region. And Sanjay ji used to be part of Tribhuvan Das Patel Foundation, as per my understanding, before this, and he was invited to envision the work of the rural development work
for Urmul Dairy, the cooperative dairy. And so he and some Arvindji, Mr. Arvind Ojha, Shri Arvind Ojha, who these were some initial people who envisioned this organization to what it is today, and also the way these organization was structured. Urmul as a system was way ahead of its time. And I would like to invite Mr. Ramesh Saran to, if he could give a small gist of how things have developed over the period of time and how the journeys have been at Urmul Trust. हेलो, नमस्ते सभी को। अगर उर्मुल ट्रस्ट के बारे में अगर हम बात करें, ये एक शुरुआती विजन था संजय जी का, और जिस तरीके से उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को बनाया, जिस तरीके से लोगों को साथ लिया, मुझे लगता है बहुत सारे डेवलपमेंट के मॉडल जो हैं देश में अलग अलग तरीके से काम करते रहे हैं, करते रहेंगे। बट अगर इस पूरे मिशन में अगर हम उर्मुल को समझना चाहें, क्योंकि उन्होंने 87 से 97 तक उनका जो है वो बहुत क्लोजली इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट रहा। बट किस तरीके से उनका मॉडल जो है वो सक्सेसफुल रहा, वो इस बात से समझा जा सकता है कि आज भी 20 साल बाद, 20-22 साल बाद भी लोग उसी वैल्यूज को लेके उसी जो है वो मिशन और जो एक आइडियोलॉजी उनका जो था कि कभी भी अगर आप बात करते हैं तो उस आखिरी इंसान के बारे में सोचे जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, और उस इंसान के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है। तो जब भी अगर कोई आप कुछ भी अगर प्लान करते हैं तो कीप इन माइंड कि वो इंसान जो वो किस तरीके से आपसे जो है वो बेनिफिट ले पाएगा जो है। तो उस चीज को समझने की कोशिश करें। 23 साल बाद अगर उस मिशन के तौर पे, और जो उन्होंने 94 में जिस तरीके से इस पूरी व्यवस्था को जो विकेंद्रित किया, जिस तरीके से उनका पूरा कॉन्सेप्ट जो था कि लोकल लीडरशिप जो है वो विद इन इंस्टीट्यूशन जो है वो डेवलप हो, हर लेवल पे जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो लोगों के हाथ में रहे, वो चीजें जो उन्होंने डेवलप की आज भी तकरीबन 23 साल बाद अगर हम देखें तो तकरीबन 7-8 जगह उर्मुल के अलग अलग ऑफशूट जो जिस फिलोसॉफी के साथ उन्होंने स्टार्ट किया, और वहां से देखें तो ये यात्रा जो है जो उस वक्त अगर जिस तरीके से अगर हम जो है वो 130 या 40 गांव के साथ काम करते थे, आज उर्मुल और उर्मुल के ऑफशूट जो वो तकरीबन 2000 गांवों के साथ अलग अलग जगह काम करते हैं, और उसी फिलोसॉफी और उसी वैल्यूज के साथ जो है, और वही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इनफैक्ट उर्मुल का। और यूएसपी कह सकते हैं उसको कि बहुत सारे संस्थाएं होती है या डेवलपमेंट फील होता है जिसमें अलग अलग लेवल पे जो है वो अलग अलग तरीके के जो है वो बदलाव आते हैं, पर इस पूरे उर्मुल में अगर बदलाव देखें तो स्केल अप बेशक किया गया, पर मूल जो सिद्धांत जो थे उस पे आज भी उसी तरीके से लोग कायम हैं, और उसी का परिणाम है कि आज तकरीबन हम लोग जो पूरे पश्चिमी राजस्थान में जो हैं तकरीबन 10 संस्थाओं के साथ अलग अलग मुद्दों को लेके, जो कि समुदाय आधारित मुद्दों की जो विचारधारा शुरू से रही कि ऑर्गेनाइजेशन अपना मैंडेट कोई लेके नहीं जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विद इन पीपुल, बी पीपुल, बाय पीपुल्स, उस सिद्धांत पे अगर हम काम करेंगे, और वही सिद्धांत आज भी जो है वो संस्था उस तरीके से कर रहा है। दोनों तरीके से स्केल अप, अगर इन टर्म्स ऑफ द विलेजेस, इन टर्म्स ऑफ द अगर जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको अगर देखना चाहें, जिस तरीके से डेवलपमेंट पार्टनर्स हम लोगों के साथ जुड़े हैं, तो उन सब के साथ जिस तरीके से उर्मुल ने अपने आप को मेंटेन किया है, वो मुझे लग रहा है सारा उस विचारधारा या उस व्यक्ति से जुड़े हुए जिस तरीके से लोग प्रभावित रहे हैं कि लोग मानते हैं कि आज हम 100 साल या 150 साल बाद भी गांधी जी की विचारधारा को लेके चलते हैं। हाँ, पर वही अगर हम समझना चाहें कि संजय घोष को आज भी लोग 25 साल बाद, 25 वो अप्रैल 97 में आखिरी बार बीकानेर आए होंगे जो है,
पर उसके बावजूद भी आज भी अगर आप किसी भी जगह पे अगर काम करते हैं तो उस वक्त के जितने जो मूल सिद्धांत जो थे उन चीजों को आज भी लोग लेके काम करते हैं और वो सिद्धांत आज भी लोगों के मन में बसे हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज थी कि जिस तरीके से सोच उन्होंने जो दिया था। दूसरा, अगर साथ के अनुभव मेरे ख्याल से अगर हम बात करें तो शायद समय कम पड़ जाएगा जिस तरीके से उनके साथ हम लोग काम करते रहे। बट मुझे लगता है जितने लोग उर्मुल के साथ और जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, निसंदेह वो मतलब उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाए और उनके पास पता नहीं कितनी यादें होगी जिसके बारे में अगर कुछ भी हम बोले या लिखें तो शायद जगह कम पड़ जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अगर किसी भी लीडर की लीडरशिप को इस तरह से आंक लिया जाता है कि वो अपने पीछे कितने लीडर्स को छोड़ के जा रहे हैं, तो संजय जी वाज अ लीडर हु यूज्ड टू ग्रूम लीडर्स एंड दैट कैन बी वेरी ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम बात करें, उर्मुल ट्रस्ट 80s में जब शुरू हुआ और उसके बाद 90s में डिसेंट्रलाइजेशन का फेज आया, जिसमें जितने भी उर्मुल ट्रस्ट के अलग अलग ऑफिसेस थे उनको एक तरीके से ऑटोनॉमस बॉडीज बना दिया गया कि आप अपने इलाके के अंदर उन्हीं मुद्दों पे, उन्हीं मूल्यों के ऊपर काम कीजिए जो उर्मुल ट्रस्ट ने सिद्धांत और वैल्यूज सेट कर दिए थे। तो इसी दौर में उर्मुल सीमांत समिति जो बज्जू में काम करती हैं और उर्मुल सेतु जो लूनकरण सर के एरिया में काम करती हैं, और इसी तरह से और कई संस्थाएं, उर्मुल खेजड़ी, उर्मुल मरुस्थली बुनकर विकास समिति, बहुत सारी संस्थाएं, उर्मुल नेटवर्क का जन्म हुआ। तो उसी नेटवर्क में से दो पुराने काफी हमारे सीनियर लोग हमारे साथ जुड़े हैं। रामेश्वर जी, अगर आप अपनी जर्नी के बारे में बता पाए। रामेश्वर जी हेड्स उर्मुल सेतु, लूनकरण सर। हेलो, नमस्कार। आवाज आ रही है ना प्रेरणा? जी जी रामेश्वर जी। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में जब संजय जी ने जब काम शुरू किया था तो बहुत चुनौतियां थी, और उन चुनौतियों को पार पाने के लिए जो संजय जी ने रणनीति, कार्यक्रम और उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए जो टीम बनाई, उस टीम में संस्थान के जो वर्क कल्चर स्थापित किया, वो सबसे बड़ा सीखने वाला बात है। आज भी यदि उस तरीके से हम देखें, दूर दराज जहाँ पे जाने आने के लिए कोई साधन नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी लोगों के अंदर इतना कमिटमेंट आता था कि वो सब कुछ छोड़कर, जहाँ प्याज भी नसीब नहीं हो उसी क्षेत्र में जाकर वो काम करने के लिए तत्पर रहते थे, और वो अपना 100% देने का प्रयास करते थे। संजय जी ने हमेशा सहभागिता को प्रमोट किया और लोगों को स्वामित्व देने के लिए प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि ये जो मॉडल, जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात जो रमेश जी कर रहे थे, ये सारे जो संस्थान थे वो गांव स्तर पर भी लोगों के समूह बने, लोगों ने चुनौतियां स्वीकार करी और लोग जुड़कर काम करने लगे और हर तरह के लोगों के साथ काम किया गया। मुझे याद है एक छोटे से गांव का उदाहरण मैं देना चाह रहा था। राजपुरिया गांव है, वहां पे संजय जी गए और एक मीटिंग कर रहे थे। तो गांव के लोग अमूमन जब बाहर के लोग आते हैं तो अपनी समस्याएं बताते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि लोग है वो बाहर के लोग उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो संजय जी ने जब बात करी लोगों के साथ में, तो जो गांव का चौपाल होती है वहां पे पानी इकट्ठा होता है और लोग कह रहे थे साहब ये बहुत दिक्कत वाली बात है, पानी है वो इकट्ठा हो जाता है और फिर रास्ता बंद हो जाता है, निकासी के लिए जगह नहीं है। तो संजय जी ने मीटिंग करते हुए पूछा कि भाई किस किस के घर में फावड़ा है, वो फावड़ा लेकर आ जाओ, किसके यहाँ पे कोई ट्रैक्टर है तो वो लेके आ जाओ। और जो लोग 150 लोग इकट्ठे थे, सबको इस तरह से मोटिवेशन दिया और उनको लगा कि ये समस्या हमारी है और सारे लोग जुड़ गए और उसी समस्या को उसी समय वहां पे समाधान कर दिया गया। तो बहुत सारी चीजें लोगों के अंदर काम करने के लिए इस तरह से प्रेरित लोग हो जाते थे कि वो खुद ही अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद ही लग जाते थे। और यही उर्मुल का जो सोच था कि लोग खुद अपनी समस्याओं को समझे
और उनका समाधान खुद ही मिलकर करें। तो ये जो कॉन्फिडेंस संजय जी में सब में लेकर आए और लोगों को जोड़ा और सहभागिता जो हर काम में लोगों की ली, तब लोगों को लगा कि ये बाहर के व्यक्ति नहीं है, हमारे साथ ही मिलकर काम करने वाले हैं, हमारे ही लोगों के साथ हम जैसे ही लोग हैं। तो उन्होंने हर व्यक्ति को, उर्मुल के व्यक्ति को अपनाया और उनके साथ जुड़ते चले गए। एक बार मैं जब संजय जी के साथ जा रहा था तो संजय जी किसी का एक उदाहरण दे रहे थे भाषा संबंधी समस्याओं को लेकर। तो संजय जी ने मुझे बताया कि मैं ढाणी भोपालाराम में जब पहली बार गया तो मुझे ठीक से हिंदी भी नहीं आती थी और लोग बात कर रहे थे, तो लोग जब बात कर रहे थे तो लोग मैं भी बात करने का प्रयास कर रहा था, लोग हंस रहे थे तो मैं भी हंसा साथ में। तो लोगों ने पूछा भी आप क्यों हंस रहे हो? तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो? कि हम तो आप पे हंस रहे हैं कि आप हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। तो संजय जी ने कहा कि मैंने भी यही कहा कि मैं भी अपने आप पे ही हंस रहा हूँ कि मैं आपके बीच हूँ और आपकी बात नहीं समझ रहा हूँ। और ये जो बात संजय जी मेरे साथ कर रहे थे, तो ये पूरा जो मारवाड़ी होती है उसमें, और बहुत ऐसे कठिन शब्द जो मुझे भी, मारवाड़ी यहाँ का पैदाइशी है मेरा, मुझे नहीं आ रही थी, लेकिन संजय जी बोल रहे थे। तो संजय जी जिस स्पिरिट के साथ लोगों के को जोड़ा, उससे लोगों का कारवां बनता गया और ये काम है वो चलता गया। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा, गांव के लोगों को जोड़ने के साथ साथ में संजय जी ने दूसरा जो बड़ा काम किया, सरकार के साथ भी। अभी जो जितने भी संस्थान हैं, चाहे उर्मल सीमांत की बात करो, सेतु की बात करो, या ट्रस्ट की बात करो, या पश्चिमी राजस्थान में जितने भी संस्थान के जो संसाधन है, वो भी मोस्टली सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है संस्थान को। और संस्थान ने सरकार के साथ भी, आईएएस अधिकारी जितने भी लोग थे उनके साथ भी पूरी समस्याओं को शेयर करते हुए उनके समाधान को लेकर लगातार काम करते। जैसे लूणकरण में पानी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, तो लगभग जो गांवों के अंदर उस दौरान पानी की समस्या थी, तो सरकारी स्कीम के माध्यम से ही गांव में पानी की व्यवस्था करी। 88 में जब अकाल था तो चारागाह विकसित और चारा बैंक, बीज बैंक, ये सारे जो थे, तो हमेशा सरकार के लोगों को भी संजय जी बीच में लेकर आए कि वो भी समस्याओं का समाधान करें और मेन स्ट्रीम में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी रणनीति थी कि सरकार के साथ भी मिलकर काम करें। तीसरा था मीडिया, जिसमें संजय जी खुद भी गांवों की समस्याओं को लेकर कॉलम लिखते थे और जो चरखा की स्थापना की और हर जगह पे एक जोड़ने का प्रयास किया कि ये जो भी छोटे छोटे काम हो रहे हैं वो कहीं पे सब लोगों के लिए सीखने को मिले। और हर जगह पे लोगों के साथ संस्थान का काम, संस्थान के जुड़ाव को उन्होंने प्रचार प्रसारित किया। इसीलिए मुझे लगता है कि उर्मुल एक अंतरराष्ट्रीय छवि बनाने में सक्षम हुआ। और संजय जी ने हर मुद्दा जो था उसमें प्रयास किया गया कि लोग अपनी सहभागिता के साथ साथ सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जुड़ाव किया था वो श्रमदान के साथ, बिना पैसे लोग हर काम में लग जाते थे और काम करते थे। और ये जो मैं फ्रेंड्स ऑफ संजॉय के नाम से जब हम आसाम गए थे तो उस काम को भी हमें देखने को मिला। उस गांव में जब हम गए तो वहां पे एक पौड़िया करके जगह था, तो वहां पे लोग बता रहे थे कि आज हम यहाँ पे हैं संजय जी की वजह से हैं। और वो जो काम किया गया था बाढ़ को रोकने के लिए, वो सबसे लो कॉस्ट था और सबसे मजबूत था। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो काम संजय जी कर रहे थे वो सारे लोगों की सहभागिता से कर रहे थे और हम सब के लिए वो प्रेरणा का स्रोत इसलिए थी, ऊर्जा थी। और सब लोग मूल्य और सिद्धांत जो हम तय करते थे वो भी सहभागिता से तय होते थे। और जिस व्यक्ति ने यदि सहमति दे दी कि हाँ मैं ये चीज करने के लिए तैयार हूँ, ये छोड़ने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद यदि नहीं मानता तो उसके लिए संजय जी हमेशा कहते थे कि आप असहमत होने के लिए आपका हक है, लेकिन आप यदि सहमति जुटाते हो और उसके बाद यदि काम नहीं करते हो तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो हमेशा उस तरह की चीजों को मॉनिटर भी करते थे। बिहेवियर चेंज को लेकर विशेषकर बात कर रहे थे। एक मैं छोटा सा उदाहरण देकर मेरी बात खत्म करना चाहूंगा। एक छोटा सा गांव है मकड़ासर, वहां पे हमने महिलाओं की एक दुकान, सामूहिक दुकान
शुरू की थी। हम लोग जो काम कर रहे थे तो हम ये धूम्रपान और ये सब वर्जित थे हम सबके लिए, संस्थान के लिए, और संस्था जहाँ पे भी लोग काम कर रहे थे उनको भी प्रमोट कर रहे थे। तो संजय जी जब हमारे साथ उस गांव में गए तो उस दुकान में गए तो एक छोटी भाई उस दुकान को चला रही थी। तो संजय जी गए, देखा तो छोटी भाई से पूछा कि भाई कैसी दुकान चल रही है। तो छोटी भाई ने कहा कि बहुत बढ़िया चल रही है साहब, आप बताओ और क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने संजय जी ने कहा कि और तो सब बढ़िया है, आप इसमें यदि शराब की बोतल रख लेते तो बहुत अच्छा होता। तो वो एकदम से उन्होंने कहा कि आप साहब ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो संजय जी ने कहा मैं तो ठीक ही बोल रहा हूँ, अभी आपकी दुकान में बीड़ी, सिगरेट, जर्दा ये सब है, तो फिर आप वो भी रख सकते थे। कि नहीं नहीं साहब, वो तो ये बीड़ी सिगरेट तो वो बिक्री नहीं होती है। तो कि मैं वही तो बात कह रहा हूँ कि वो भी आप रख लेते तो अच्छा है। तो हर जगह पे जो हम सहभागिता से तय करते थे उसको मॉनिटर भी करते थे, और उसी दिन से महिलाओं ने निर्णय लिया कि ऐसी चीजें हम हमारे यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो इस तरह से लोगों को प्रेरित भी करते थे और उनको इस तरह के काम में बदलाव, बिहेवियर चेंज के लिए काम करते रहे। हम सबके लिए एक बार भी यदि हम संजय जी से मिल लेते थे तो उससे हमारे जो अंदर जो स्फूर्ति और काम करने का जो तरीका था वो बदल जाता था। और संजय जी हमेशा, हर व्यक्ति यदि गांव में भी सबसे गरीब है तो हमारी जो मीटिंग होती थी, मासिक बैठक, तो पूछते थे भी आप उस गांव में काम कर रहे हो तो सबसे जो गरीब दो व्यक्ति है उनके नाम आप बता सकते हो, उनके घर आप कब गए, आपने उस घर में जाके क्या बातचीत की थी। ये सारा काम करने की प्रोसेस थी जिससे कार्यकर्ताओं को सीखने को भी मिलता है और काम करने की नई प्रक्रिया से जुड़ते गए। तो एक कार्यक्रम करने के लिए वर्क कल्चर जो संजय जी ने डेवलप किया वो मुझे लगता है आज भी हमें आगे लेकर जा रहा है। यही एक मुझे लगता है कि उर्मुल की पूंजी है। धन्यवाद। धन्यवाद रामेश्वर जी। बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज रामेश्वर जी ने बोली कि संजय जी जो टीम थी, ये लोग जज नहीं करते थे, ये लोग एजुकेट करते थे, जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हम लोग बहुत इजीली जज कर लेते हैं। हमारे साथ पूर्णाराम जी भी जुड़े हुए हैं उर्मुल सेतु संस्थान से। पूर्णाराम जी, अगर आप अपना वीडियो और ऑडियो चालू करें। सब लोगों से नमस्ते। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है पर आप साफ नहीं दिख रहे हैं। इसमें थोड़ा सा कैमरे में दिक्कत है। अच्छा, कोई बात। आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। आप बोलो। तो सबसे पहले तो बार बार मैं संजय जी का नाम आता है तो नमन करता हूँ उनको। और अगर इस बारे में मैं बताऊं तो सबसे पहले 1986 फरवरी में मुलाकात हुई थी और अरविंद जी साथ में थे। मैं एक छोटे से गांव से यहाँ, जहाँ रामेश्वर जी ने बताया राजपुरिया, उस मीटिंग में मैं भी था। तो राजपुरिया गांव में का हूँ मैं दूध डेयरी से ये शुरू हुआ था। इधर के डायरेक्टर जो है तिरभुवन दास फाउंडेशन गए थे, वहाँ दूध के डायरेक्टर वगैरह, ये अध्यक्ष जो होते हैं ये सब है, और वहाँ संजय जी काम कर रहे थे। उन लोगों ने वो तिरभुवन दास फाउंडेशन में वो लोगों के साथ काम कर रहे थे स्वास्थ्य को लेके, और इधर हम लोग पशुओं के साथ, जो दूध देने वाली गाय है उनके लिए तो डॉक्टर आ जाता था, पर एक महिला कोई बीमार है, बच्चा बीमार है तो कोई सुविधा नहीं थी। एक डॉक्टर साहब थे सांकलादी नाम के, कालू के, वही आंखों के डॉक्टर थे, या नूनरस में कोई सुविधा नहीं थी। तो इन लोगों को लगा कि भाई स्वास्थ्य को लेके कैसे ऐसी सुविधा हमारे भी हो। तो संजय जी बताते थे कि मेरे को ये बताया गया कि आप जाके वहां काम कर सकते हो। तो वो एक बारी पहले इधर आए, पर हम जो राजपुरिया में मुलाकात हुई थी 1986 में हुई थी, अरविंद जी साथ में थे, दूध में तुलाता था। तो शुरुआत से अगर हम देखें
उनके बारे में तो बाकी मैंने सुना है सब, बाकी बातचीत तो स्वास्थ्य से शुरू किया था। यहाँ ना तो टीकाकरण होता था समय पे, और बहुत एक नाथुसर गांव है, तो वहाँ बहुत एक दुलमेरा स्टेशन है, टीबी के मरीज, बहुत टीबी की बीमारी बुरी तरह से फैली हुई थी, और जिसको भी टीबी हो जाती वो या तो 9 महीने दवाई नहीं लेता, उस समय 9 महीना का कोर्स था। तो एक तो पूरे अगर इधर देखे तो 2 तरह का, एक तो टीकाकरण शुरू किया बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, और दूसरा टीबी का इलाज शुरू किया संस्था की तरफ से। इधर के डॉक्टर गोड़सा जी थे, सांकला जी थे, और बाहर से भी डॉक्टर आए, कई ग्रोवर साहब आए। उसके बाद सुनील जी दिख रहे हैं सामने बैठे, इन्होंने भी सेवा दी। और तो एक हिसाब से यहाँ उर्मुल में अस्पताल चलाया, अस्पताल पूरा ही चलता था, जांच थी, सारा कुछ था, तो स्वास्थ्य। और उनके बाद उनकी एक सपना था कि कैसे इधर शिक्षा का अभाव है, 3 चीज प्राथमिकता में थी संजय जी के, और वो आज भी चल रही है। उनका विचार था कि एक तो शिक्षा हो, आजीविका, लोग जो वंचित वर्ग है उनकी आजीविका कैसे चले, वो लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाएं, खुद के पास कुछ हो उनके, और अपने आप वो कुछ कमाने लगे। तो ज्यादातर यहाँ खेती बाड़ी में थे, नवाचार करते रहते थे, कंपोस्ट खाद का और बीज बुआई सब कुछ दिया था। 1987 में बहुत बड़ा अकाल था इधर, तो उस समय पहले तो रोजगार चलवाया सरकार के साथ मिलके, जो आगे रामेश्वर जी ने बताया। और उसके बाद जैसे लोगों के पास कुछ था ही नहीं, जमीन है इधर राजस्थान में गांव में जहां जहां संस्था काम कर रही है, पर उस समय बहुत हर गांव में लगभग 50-60 परिवार ऐसे थे जिनको अगर संस्था नहीं होती तो शायद वो खेती नहीं कर पाते। एक मरबा जमीन 25 बीघा राजस्थान की उनकी हो, बाकी ट्रैक्टर और बीज जो उसमें मोट ग्वार जो भी है वो संस्था ने दिया, और बीज बैंक पर तो खेती करवाई। उसके बाद लोगों के उस समय अनाज भी हुआ, तो अकाल रात के समय भी बहुत पहले तो रोजगार शुरू किया, उसके बाद खेती करवाई। तो एक तो गरीब व्यक्ति था, किसान था, और उनकी की शिक्षा हो, पर खास करके बालिका शिक्षा हो, क्योंकि महिलाओं का विकास हो। तो उसके बाद जैसे जैसे प्रयास करते और 6 गांव से काम शुरू हुआ था इधर, और आज जैसे अभी रमेश जी बता रहे थे आगे की पूरी जगह 2000 गांव में काम, तो ये संजय जी की ही देन है। इधर से ही एक शुरुआत हुई थी जहां हम बैठे लोनकंस में, इसी ऑफिस से। एक तो अगर देखें तो इधर छुआछूत भी थी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा एक लक्ष्य ही था कि छुआछूत कैसे कम हो। तो उनके इधर कोई भी आओ, अपने आप संस्था का ये सिद्धांत में ही आता है, उनका सिद्धांत था, संस्था के मूल्य थे कि भाई बर्तन है जो अपने आप हिसाब करेंगे। तो किसी को ये नहीं थी कि भाई कोई उच्च जाति का आ गया तो बर्तन वो उसका तो हम कर लेंगे, और दूसरा खुद कोई अनुसूचित जाति का तो खुद करेगा, तो ये नहीं था उनके। बिना भेदभाव के, चाहे वो महिला हो या कोई अनुसूचित जाति का हो, तो एक बराबरी थी, बराबरी का था, और तभी लोगों का जुड़ाव था। दूसरी जो समस्या की पहले भी बात आई थी, इधर बैठ के कुछ नहीं करते थे। मैं तो जो भी नियोजन वगैरह रणनीति वगैरह बनाते थे लोगों को लिए कि अपन करना क्या है, तो फिर लोगों में जाते और उनकी समस्या उनसे पूछते कि भी आपके दिक्कत क्या है। गांव में जाके वो कहते हमारे ये दिक्कत है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो। सहभागिता के बगैर कोई भी काम संजय जी ने नहीं किया। छोटा सा काम होता तो हम लोगों को कभी कभी तो रात को ही बुला लेते थे, रात को के बैठो ये करना है अपने को, आप बताओ कैसे करें, क्या करें। तो भाई हम, और थोड़ा सा अनुभव बताता हूँ। पहली बार मैं जब मीटिंग में बैठा तो अब कैसे पता ही नहीं था, तो
मेरे जो भी बेटे थे जो नहीं बोलने वाले थे, तीन तीन तिल्लियां दे दी हाथ में कि एक तिल्ली फेंक दो, एक बार बोलना है। यहाँ से शुरुआत हुई थी, अब ये देख लो आप। तो ये था। तो एक तो सहभागिता थी। दूसरा देखिए तो उनका मैं बाद में बताऊंगा वो सारा कुछ अब तक हुआ क्या है। दूसरा था कि विश्लेषण करने का उनका था। राजपुरिया का एक अनुभव बताऊं, वो उस समय की बात है जब मैंने 60 लोगों की लिस्ट बना ली मेरे ही गांव में भी। अब तो पूरे गांव की गरीबों की लिस्ट बन चुकी, ठीक है। वो एक घर लेके गए, क्योंकि वो जाट लोगों का घर था, कुंदना राम नाम था उनका। तो वो घर छूट गया, सीधा वहां लेके गए कि इनका नाम लिखा कि नहीं लिखा। हमको इनका तो नहीं लिखा, कैसे लगते हैं उनको, साहब छूट तो गए ये। तो उनका पता नहीं कैसे पहली बार गए और सीधा उसी घर लेके गए। तो एक वो जो गांव में जाके उनका विश्लेषण का था, बहुत ही बड़ा तरीका था। वो पता नहीं कहां से पता करते थे, किन से पूछते थे, क्या नहीं थे, पर सीधा। तो वंचित वर्ग में 3 थे उनके, किन के साथ काम करना है बार बार, और उसी सिद्धांत पे, उसी मूल्यों पे आज भी संस्था चल रही है। हम लोग भी उनके साथ काम किया है, तो वो ही कर रहे हैं। महिला थी, बच्चे थे, और गांव में गरीब कौन है, जाति नहीं थी कोई भी, ये राजपूत है या कोई ब्राह्मण है या बनिया है, नहीं, गरीब है। तो उनके वो चयनित थे, जैसे सरकार चयनित अभी बीपीएल बना रही है ना, उनके बीपीएल गरीब था, गरीब परिवार, और बच्चे तो थे सारे, किसी की भी हो, महिला थी। अभी देखें तो जैसे लगभग जैसे स्वास्थ्य में अगर देखें तो सभी लोग अभी सरकारी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। अंधविश्वास बहुत अंधविश्वास था उस समय, अभी वो खत्म हो गया सारा, है नहीं। और बालिका शिविरियां शुरू किया है 1998 से, उर्मुल सेतु में, उर्मुल ट्रस्ट में, सीमांत में, सब जगह। तो बहुत सारी बालिकाएं अभी पढ़ गए और आगे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही है। बहुत सारी बच्चियां अभी भी सरकारी नौकरी में गई है, कई संस्थाओं में काम कर रही है। और उनका आजीविका में अगर देखें तो खुद का रोजगार कैसे चले, तो अभी वर्तमान में चल रहा है सारा कुछ। हमारे प्रशिक्षण बच्चियों के लिए सिलाई का होता है, अलग होता है, दुकानें चल रही है, सब कुछ। तो खास करके आजीविका में ये, और बहुत सारे महिलाओं के संगठन बना रखे हैं। उनकी बचत आज देखें तो बहुत करोड़ों में है, महिलाओं की खुद की बचत। तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि भाई, तो ये भी उनका एक मॉडल है। बीज बैंक, चारा बैंक आगे बता ही दिया अभी। और एक उनकी थी कि महिलाओं की राजनीति में कैसे भागीदारी हो। तो 50% महिलाओं की पंचायती राज में या इसमें भागीदारी की है। उसमें अंगत प्रोजेक्ट के तहत जब काम किया था तो महिला बहुत सारी, इधर की महिलाएं दिल्ली लेके गए थे, सब दिल्ली में उनको लेके गए थे। तो वो राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी थे, मैं साथ में ही था। तो वो दिन भी उनसे महिलाओं को मिलाना, पुरुष लोग नहीं मिल पाए। तो ये एक महिलाओं के प्रति जो महिला चेतना की, महिलाओं को विकास का था। तो वो एक महिलाएं आज से 50% तो है ही, उनसे आगे पुरुषों की जगह भी पंचायती राज में चुनाव लड़के हम सब लोग देख ही रहे हैं, तो आगे आ रही है। तो वो भी उनका एक सपना था। बच्चियां, लड़कियां बहुत सारी एमए बीएड कर रही है, सरकारी नौकरी में जा रही है, संस्थाओं में जा रही है। तो ये सारा। और दूसरा अगर देखें तो उन्होंने गांव में जो किया था। पूर्णाराम जी, आपका जो बुनकरों के साथ काम हुआ, थोड़ा उस पर भी हाँ, तो वो फलोदी से 4 लोग आए थे, 4 लोग आए थे, चेतन राम जी, सुरजन राम जी, रामचंद्र जी। तो ये 4 लोग आए थे। और आज जो इधर भी चल रहा है और फलोदी में भी चल रहा है,
गांव में भी महिलाओं के लिए जैसे कसीदा है, दूसरी है आज इधर जो लूणकस में महिलाओं को काम मिल रहा है, आज की तारीख में जो महिलाएं रोजगार ले रही है, सिलाई है। और उसके बाद धन्यवाद मैं देना चाहूंगा सुमिता जी को कि रंगसूत्रा के तहत महिलाओं को, बच्चियों को, सबको काम दे रखा है और आगे भी अभी शुरू कर रखा है। तो ये भी रोजगार दिया है। और दूसरा अगर देखें तो महिलाओं के समूह बने हैं बहुत सारे इधर आजीविका को लेके, तो वो भी अपना बचत कर रही है और बचत के हिसाब से और काम भी कर रही है सारा कुछ, तो वो भी महिलाओं के विकास के लिए। तो तीन चीज बड़ी थी और तीनों आज भी चल रही है। बच्चों की शिक्षा, बालिका शिक्षा, और महिलाओं के लिए काम है, और कृषि में भी जो हो रहा है, जो बीज बैंक, चारा बैंक, ये सारा कुछ किया था और आज भी चल रहा है, सरकार के साथ समन्वय था। तो ये सारा कुछ किया है। और जो उनके जो सिद्धांत थे संस्था के, वो आज भी बरकरार है। तो धन्यवाद। धन्यवाद। ज्यादा समय तो नहीं लिया। नहीं नहीं, बिल्कुल। चाहे पूरे दिन करते रहे ना, तो भी उनके बारे में हम बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद पूर्णाराम जी। नींव जितनी मजबूत होती है, इमारत उतनी ही मजबूत होती है। आई थिंक ये वही उनकी बात का अगर जिस्ट निकाला जाए। मेरे साथ सुनील लहरी जी भी जुड़े हुए हैं। ये उर्मुल सीमांत समिति के सेक्रेटरी हैं। सुनील जी, अगर आप बता पाएं कि अभी किस तरह के काम जो अरविंद जी और संजय जी का जो विजन था इस इलाके में, जिस इलाके में आप काम कर रहे हैं, तो उसको कैसे अब आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लहरी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं। I don't think he's online. He seems to be visible. Okay. I think I'll invite इस काम को आगे लेके जाने में जो मैंने पहले बोला था कि he created leaders who could continue the work that he envisioned, and he and Arvind ji envisioned, and they created local leadership. These are not people who have studied or who came from anywhere else, but these are all local people जो अपने इलाकों की समस्याओं को समझ के उनके ऊपर काम कर रहे हैं आज की डेट में भी। और बहुत नए तरीकों से उन्होंने जो एक पूरा कल्चर इनोवेशन का और एक पूरा कल्चर क्रिएटिव थिंकिंग का ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डाला था। जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील लहरी जी। तो सुनील जी, अगर आप बता पाएं कि अभी किस तरह से आप लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हेलो पेंडा जी। हाँ जी, हाँ जी लहरी जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं आज सुबह से ही मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं 10:30 पौने 11 बजे जुड़ गया था आज, और लगातार मीटिंग चल रही थी और मैं सुन रहा था। रियली बहुत मेरे को बहुत सारी चीजें पता चला कि संजय जी ने किस तरह से अपनी यात्रा को शुरू किया, लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए। बहुत ही मेरे लिए बहुत नए एक्सपीरियंस थे। संजय जी को मैंने बहुत कम समय के लिए देख पाया था। मैं जब मैं आया था तो वो उसी समय एक बार मेरे को याद है कि वो होली के समय यहाँ पर आए हुए थे और मैं भी यहीं था होली के समय। और तो सबसे अच्छी बात उनकी जो मेरे को खास लगी कि वो व्यक्ति को पहचानते बहुत आसानी से थे, पहचान लेते थे कि कौन व्यक्ति किस नेचर का है, किस तरह की समझ है उसकी, वो किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहता है, किस तरह की सपोर्ट की उसको जरूरत है। ये सारी चीजें उनको पता चल जाती थी। और उनका सबसे अच्छा तरीका था कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये नेचर मेरे को बहुत ही जबरदस्त उनको लगा। मैं रियली कह रहा हूँ कि मैं पहचान नहीं पाया उनको एक बार तो कि संजय जी हैं कौन, जबकि मैंने देखा, पता चला कि संजय जी ही है। मैंने उनसे पूछा, मैं कि सर मैं संजय जी को, वो पूछा कि आप किसको देख रहे हो। मैंने कहा सर मैं संजय जी से मिलना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा संजय मैं ही हूँ, बैठिए आप। फिर वो लैपटॉप पे काम कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा 2 मिनट बैठा रहा, फिर उनके बाद लैपटॉप बंद किया, फिर बातचीत हुई। तो रियली
अब ये है कि जिस तरह से हमें सोचना पड़ रहा है कि जिस तरह से वो कम्युनिटी के साथ उनका अटैचमेंट था और वो कम्युनिटी के लोगों को पूरा सम्मान देते थे, आदर सम्मान में किसी तरह की उनकी बातें मन से सुनते थे, धैर्य के साथ सुनते थे और कहीं पर भी उन महिलाओं को, बच्चों को, किसी को भी लगता था कि नहीं मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ आपके काम में, तो वो सारी उनके पास पूरी जानकारी होती थी हर परिवार के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में। चाहे वो मेरे को पूरी तरह से याद है कि चाहे वो दिल्ली में थे या दिल्ली से बाहर भी कहीं थे, तब भी वो यहाँ के लोगों को पहचान जानते थे, उनके बारे में पूछते रहते थे, पता करते थे कौन क्या चल रहा है, कैसे है। तो हमें भी अब यही है कि हम कम्युनिटी के साथ जो हमारी मूल काम है, मूल विचारधारा रही है कि हम वंचित लोगों के साथ काम करें, विशेषकर महिलाओं, वंचित वर्ग के लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में। तो हम उनको कैसे तवज्जो दें, उनको कैसे रेस्पेक्ट तरीके से उनके साथ मिलकर के काम करें, कैसे इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कैसे हम यूथ के साथ काम करें, यूथ को पूरी जिम्मेदारी के साथ उस पर कैसे हम अपना विशेषकर कौशल डेवलपमेंट में आगे लेके जाएं, मीडिया के थ्रू हम उसको कैसे और उसको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को मालूम है कि एक बार जब यूथ से हम बात कर रहे थे, उस समय उन्होंने पूछा था कि यहाँ मीडिया हमारी चीज़ों को किस तरह से कवरेज करता है, इस पे दे पाता है या नहीं दे पाता है। तो उनका ये कहना था कि यदि आप अच्छा यूनिक कर रहे हैं, कुछ समाज से अलग हट के कर रहे हैं, तो मीडिया आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो कवरेज देगा अपने आप ही। तो हम ऐसा कुछ वर्क करें, ऐसा कुछ काम करें जहाँ लगे कि ये वास्तव में औरों से अलग हटके काम है और लोगों के लिए काम है, जहाँ जिस संस्थान में, जिस जगह, जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका और उसी विचारधारा को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं और लोग भी हम उनकी जिस तरह से रेस्पेक्ट तरीके से उन लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया था संजय जी ने, उसी तरह से हम भी उसी विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये बताना। थैंक यू। धन्यवाद लहरी जी। इसी कड़ी में मेरे साथ अंशुल ओझा जुड़े हुए हैं। ही इज प्रिंसिपल एंकर फॉर डेजर्ट रिसोर्स सेंटर। डेजर्ट रिसोर्स सेंटर उर्मुल नेटवर्क के अंदर एक बहुत नए तरीके से एनविजन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसी काम को, उन्हीं विजन को, उसी क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का एक नया स्टेप है। तो अंशुल, वुड यू लाइक टू talk about the work Desert Resource Center and Sanjay ji's vision that you all have been part of? Yeah, sure. Thank you everyone. I was more interested in listening and I was thoroughly deeply involved in it. But you see, as you were speaking, and I'm sorry I missed the earlier conversation, but I was trying to think why do we celebrate personalities? Why do we what does inspire us? And I was trying to think probably it's because we want to sort of in some way we want to affiliate with that whole idea, we want to belong to. And in general the societies by virtue are trained, the systems are probably trained to look for heroes. They the marginalized, the oppressed are told, are believed, made to believe that there has to be a hero. And that's the fundamental idea that the leaders of that entire generation, Sanjay, challenged. What they're suggesting is the hero is all of us. The hero is how do we initiate, how do we take those first steps, and how do we emerge as the leaders within our communities. तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं तीन कुछ इम्पोर्टेंट कुछ की वर्ड्स को भी कोशिश कर रहा था तलाशने की। And of course, a very important disclaimer is a lot of my statement would be biased because I've had a very I was extremely privileged to sort of grow with all of these people. So my beliefs have very deeply shaped with these people. I divide Sanjoy at three level, and my interpretation a very personal level, at an institution level, and at an idea level.
Uh, uh, Personally, I know of this person, and one particular image which stays with me is in this Loonkaran campus at his house. There's this white wrought iron table, and ages back, where we are having lunch. Now, what is important is this must be 87, 88. What is important is at that time, a wrought iron table, dining table in Loonkaran, sir, and that probably is the last time he is using that kind of a thing. All right. Thereafter, he is challenging the very idea of those privileges. How he, as because it also is a journey for him. It also is a journey for that karyakarta. And while he is undertaking that journey, he is leaving all of these things behind. वो कैसे कर एक वो privileges को एक बड़े शहर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को छोड़ते हुए समाज के साथ में जुड़ते जा रहे हैं, और कैसे आप जब माजुली की तस्वीरें देखेंगे तो बहुत ही मतलब इट्स लाइक प्रोग्रेशन द अदर वे. तो कैसे the point I want to underline here is he in his living challenges the fundamental course of things. He challenges how we all who are concerned for societies, we want to do something in the societies, have to challenge and have to be disruptive that way. हमको कैसे बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ना होगा और उनसे आगे जाना होगा. कैसे एक युवा कार्यकर्ता बहुत सारे प्रिविलेजेस को छोड़ते हुए आगे बढ़ता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एंड आई वांट टू ब्रिंग इट हियर बिकॉज वी ऑल at IRMA and all the other people who have joined, किस लेवल पर जाके हम उसको फंडामेंटली चैलेंज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. स्पेशली फॉर ऑल दोज हु are from a very very professional social development approach, who are coming from that point of view. So Sanjoy's life also tells a thing or two about how do we climatize, how do we localize. So this whole concept of localization, we have Dr. Sunil Kaul. He can write thesis on the idea of localization. He has done all that. He has been doing that all this while. So localization की जो बात है वो बहुत important है. स्टेटस को चैलेंज करने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है. पर्सनल लेवल पे मेरे लिए बहुत these things have really shaped me, have really enabled me to sort of find those answers. At an institution level, of course, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं उर्मुल ट्रस्ट को लेके. Urmul Trust एक organization, सिर्फ एक organization नहीं है, and how Urmul Trust has grown into an ecosystem. Today, as an ecosystem, the network of all these organizations are collectively innovating, designing, और उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं. ठीक उसी तरह से अगर आप नॉर्थ ईस्ट में भी जाएंगे, आज भी आप त्रिपुरा के अंदर के इलाकों में छोटे से गांव में जाके मिलेंगे लोगों से, एंड दे कैन टेल यू कि हाँ उस समय वो आए और हम लोग के साथ में बैठे और इस तरह से इंस्पायर किया मेघालय के. तो how do you institutionalize things, and what is required really in institutionalizing uh, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट एक फंडामेंटल चीज को और इस समय में इस टाइम एंड स्पेस में ये बात करना बहुत जरूरी है. दैट इज हाउ डू यू प्रैक्टिस डेमोक्रेसी एवरी डे. हाउ डू यू मेक श्योर द डेमोक्रेसी इज अलाइव. हाउ डू यू कीप इट लिविंग बाय योर सिंपलेस्ट एक्शंस. कैसे हम लोगों को साथ में बार बार ला सकते हैं और उस पूरी एक क्योंकि इट्स वेरी इजी टू बी with the kind of power one gets, with the kind of power which automatically comes by opportunities and by interventions. How do you challenge it, and how do you sort of cleanse yourself? ये भी एक बहुत important चीज है जो कहीं ना कहीं we all, and especially most of the people from IRMA would be venturing out into their professional lives. How do we at some point question, introspect, what are we doing with this power? How are we making sense to this power? Are we contributing enough? Are there ways to sort of channelize this power in a more constructive way? These are some thoughts I want to sort of underline and leave with you all to further.
at an idea level, I often think on this, how within a very limited social time, generally for every individual, 35, 40, 45 years is what is a social life of a person. और उसमें हम किस तरह के प्रयास करते हैं. There is this word in Hindi, a very interesting word and a very, very deep word. It's called parampara. अक्सर हम लोग को परंपरा, हम लोग as I started sharing, we affiliate ourselves with some ideas, we affiliate ourselves with a thought, a line of ideology. The most impactful aspect of Sanjoy's life is within 20 years, 25 years of a social living, how he was able to have his parampara. All that we are talking about is Sanjoy's parampara. Tradition is a very loose translation, I would say. तो उस परंपरा, और वो परंपरा यहाँ से वहां तक फैली है, वो परंपरा is, there are so many binding factors to it: innovations, values, institutions, people, leadership. All of these things are part of those, and it is dynamically evolving. तो ये जो परंपरा की जो प्रक्रिया है, और कैसे इतने सीमित समय में हम परंपरा खड़ी कर दें, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है. That is the last point I want you all to sort of I want to leave with, कि हम Sanjoy's greatest achievement, I would say, is एक परंपरा का how to firm up that and उस पे आगे बढ़ना. Of course DRC की बात हुई. DRC, well, it is technically a very new organization, but the idea, the genesis of the organization was, of course, right, way back in 1995, 96, when Arid Zone Environment Research Center was envisioned as probably first of its kind of organization, where the idea was to sort of bridge different deserts, or work on arid zone, and how do you continue that. And in 2013, we picked it up again as a center within Urmul Trust, and in 2016, we sort of set it up as a separate organization, and we are working on different issues. Sanjay's life and his work plays a very, very, very deep role in all this that we are doing here with communities in this part of India, Thar Desert, and the kind of work that we are doing in Ladakh, or what we plan to do in other areas, including, the other deserts of the world. So we feel, as an institution, as an organization, DRC, we feel extremely privileged to sort of be part of that parampara. And I would say all of you, I would urge you sincerely to find your affiliation. Most of you are students. It'll be very, very useful to find some kind of linkages with some parampara. It always makes sense to be it's not being traditionalist, it's just being part of something bigger. Thank you very much, everyone. I wish we had a lot of time, but we would like to welcome you all, host you here, have long conversations. We have some very interesting campuses here. We can sit, have chais, and there's a lot we discuss here. Don't come with any baggages, though. Yes. Thank you so much, Anshul. And so, yeah, this has been the journey of the Urmul network of organizations we've shared with you today. All of us are still a very integral part of this organization, and every individual, ये इस organization और इस network की परंपरा, जैसे अंशुल ने बोला, रहा है कि हर व्यक्ति उतना ही important है organization के लिए, और हम सब उन्हीं चीजों को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और hopefully आप लोग भी इससे जुड़े रहेंगे, और हम लोग सब जुड़े रहेंगे. Thank you everyone. मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रेरणा मैम आपका, रमेश सरन सर जी, पूर्णराम सर जी, सुनील लाहिरी जी एंड अंशुल ओझा सर. आप लोगों ने बहुत कुछ जॉय सर के आइडियाज़ के बारे में, कैसे उन्होंने वर्क किया, बताया.
And now I request Dipti ma'am from Charkha to please come up next and share her views. Ma'am, please. नमस्कार, सुनाई दे रहा है? जी मैम. Thank you so much alumni for organizing this. सुबह से मैं सुन रही थी करीब 11 बजे से, and it's been such a pleasure. So मैं छोटे में ही कोशिश करूंगी चरखा के बारे में अनुभव रखना, इसकी सोच क्या थी और क्या किया. तो चरखा is a developmental communication network. डेवलपमेंटल इश्यूज को मीडिया तक पहुंचाना और ये इश्यूज, ये मुद्दों को इस तरह से पहुंचाना कि उनकी गहराई तक हम जा पाएं, उनके अनेक आयाम हम आगे ला पाएं और तब भी मुख्यधारा की मीडिया इसको एक्सेप्ट करे. तो ये संजॉय की सोच थी और 1994 में उन्होंने ये शुरू किया और हम सब समझ सकते हैं इसका मकसद क्यों शुरू किया. जो इंसान बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है सामाजिक सरोकारों में, उसको दिख रहा है कि जो मध्यम वर्गीय, खासकर जो रीडिंग पब्लिक है, जो पावरफुल लोग हैं, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको मुद्दों की ना समझ, ना खास इंटरेस्ट, ना खास रुचि की असल में हमारे देश में हो क्या रहा है. तो ये मैंने ज्वाइन किया कुछ महीनों बाद, क्योंकि ये मेरे जो सरोकार थे इससे एकदम जुड़ता था. तो मैं संजॉय को नहीं जानती थी. चरखा की वजह से हमने काम करना शुरू किया और ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है 2-2.5 साल का जो हमने इकट्ठा काम किया और भी टीम जुड़ी और सैकड़ों लोग जुड़े थे इससे, क्योंकि लेखक लोग ग्रास रूट्स एक्टिविस्ट थे. लेखक हम लोग नहीं थे. लेखक मेनली कुछ हम लिखते थे, पर मेन मकसद था ग्रास रूट्स एक्टिविस्ट स्वयं लिखें. और ये काम इतना रोचक भी था, इतना नया भी था कि मुझे लगता था कि ये कैसे अभी तक किसी ने सोचा नहीं है ये काम. और संजॉय की एनर्जी, संजॉय का काम करने का लगन, ये सब प्रभावित भी करता था, मजा भी आता था. तो जो ऑफिस था चरखा का, ये अवार्ड नॉर्थ ईस्ट के दफ्तर में था, जो गांधी पीस फाउंडेशन के सामने दिल्ली में स्थित है, और जहाँ न्यूज़पेपर ऑफिसेज एकदम बगल में थे. उस समय जो न्यूज़पेपर ऑफिसेज ज्यादातर बहादुर शाह जफर मार्ग में होते थे. तो हमारा काम भी बहुत होता था और बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि एक तरफ तो एक्टिविस्ट से कहना कि आप लिखिए, तो एक्टिविस्ट कहते थे आप लिखिए, आप आइए, हम तो काम कर रहे हैं, आप लिखिए, आप लोग आइए. पर हम बहुत छोटी टीम थे, फंडिंग का लगातार समस्या था और छोटी सी टीम के लिए बिल्कुल संभव नहीं था. और मकसद ही था कि लोग अपनी मुद्दों पे लिखें. तो हमने फिर लेखन के वर्कशॉप शुरू किए, राइटिंग वर्कशॉप्स, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, कहाँ रिमोट इलाकों में. और ये भी बहुत सुखद रहा और यूजफुल रहा. इसके साथ लेख जो आते थे उनको एडिट करना, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, सेमिनार जर्नल, इन सब से एक तरह की माथापच्ची नेगोशिएशन करना कि इन लेखों को आप छापेंगे, ये भी बहुत मुश्किल कार्य था. और कई बार संजय और मैं इकट्ठा भी, मुझे याद है, टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में मेन एडिटर्स से मिलना और उनका कहना कि ये तो आप कैंगरू कोट्स कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, आप तो सिर्फ लोगों की बात. तो हमारा लगातार प्रयास था बैलेंस्ड हो. ऑब्जेक्टिविटी का हमारा अपना परिभाषा है, जो है कि दोनों तरफ के जो भी जितने भी आयाम हैं वो आए. और हमें लगता था कि अधिकांश जो लेख आते हैं वो लोगों की बात तो
सामने रखते ही नहीं है। तो इसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, पर हमारा ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। तो हमको कामयाबी भी बहुत मिली, लेख बहुत छपे और बहुत एक्टिविस्ट ने लिखा। राइट टू इंफॉर्मेशन MKSS के मेरे को लगता है सबसे पहले लेख, ये मिड 90s की बात है, 95, 96, 97, और नर्मदा बचाओ आंदोलन, उत्तराखंड के म्यूजिक ट्रेडिशंस, तो बहुत सारे अनेक उड़ीसा में एल्यूमिनियम माइनिंग और अग्रगामी संस्था, बहुत सारे संस्था के लोग पहले ही अच्छे से भी लिखते थे या हमको रिपोर्ट भेज देते थे। जैसे बिहार में फीमेल इन्फेंटिसाइड का मुद्दे खूब उभर रहे थे पर मीडिया में नहीं आए थे, तो एक NGO काम कर रही थी, तो उनके रिपोर्ट्स लेकर लेख बनाना जो फिर छपे। तो ये इसका प्रवाह हो गया था अंग्रेजी मीडिया में, फिर हमने हिंदी में शुरू किया, अनुवाद खूब करते थे, हिंदी जनसत्ता वगैरह छापने लगे। मध्य प्रदेश में सर्वोदय प्रेस एक था, वो हमारे खूब सारे लेख लेकर और खूब सारे छोटे अखबारों में छापते थे। तो वो शायद मुझे लगता है अंग्रेजी से ज़्यादा वो हिंदी लेख पढ़े जाते थे। उर्दू में शुरू किया, उर्दू के अखबारों में हम लोग गए और ये सब हुआ। फिर संजॉय नॉर्थ ईस्ट जब चले गए, एक तो फंडिंग इशू बहुत था, एक साल का कुछ फंडिंग थी और हमारी टीम में 3 लोग 4 लोग थे, उनको वैसे भी बहुत न्यूनतम वेजेस थे, पर ये कोई छोड़ रहा है, कोई ज्वाइन कर रहा है, कोई और काम भी कर रहा है। तो ये अच्छा, मैंने जब ज्वाइन किया मैंने संजय से कहा कि मैं एक्टिविस्ट के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लिखना, एडिटिंग, वो सब, पर ये फंड रेजिंग मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं करूँगी और ना मैं कर सकती हूँ और ना मैं करना चाहती हूँ। तो संजय ने बहुत, मुझे बाद में लगा कि एकदम मान लिया था, वही कर रहे थे 95-96 में, पर नॉर्थ ईस्ट जाने के पहले बहुत स्किलफुली वो मेरे को हर फंडर के पास एक बार मिला लिए थे कि चलो उसी रास्ते जा रहे हैं तो 2 मिनट मिल लो। हाँ, तो इस तरह से मैं UNDP, फ्रीडरिक एबर्ट फाउंडेशन और एक और था कपाट, तीनों से एक बार मिल चुकी थी। जब पता चला कि संजय का जुलाई 97 में जब लापता है, तो पर्सनली इमोशनली तो शैटरिंग था ही, बहुत शॉकिंग और बहुत ही जैसे सब दोस्तों के साथ था, जो फीलिंग्स थी वो मेरी भी थी। इसके साथ संजय ने कहा था कि तो फ्लैग फ्लाइंग, जब वो नॉर्थ ईस्ट जा रहे थे, अब चरखा का फ्लैग वैसे ही डिप हो रहा था, तो उसको फिर बहुत मेरे को प्रतिबद्धता लगी कि इसको किस तरह कायम रखे। तब मैं जाकर रो पीट कर मैं गई, फंडर्स को फोन किया तीनों को, और एक आध ने फंड फिर प्रॉमिस किया। फंडिंग इसलिए जरूरी है कि जो लेखक लिखते थे, चाहे वो एक्टिविस्ट थे, उनको 80% हम हर एक्टिविस्ट को, हर लेखक को वापस भेजते थे। तो कैसे हर चीज होगी, हम ट्रांसलेटर्स रखे थे पार्ट टाइम, जो फ्रीलांस, पर एक हिंदी एडिटर, एक इंग्लिश एडिटर, और मैं सबको देख रही थी। तो गुजरात में शुरू किया चरखा, महाराष्ट्र में शुरू किया चरखा, और वो डिसेंट्रलाइज कर रहे थे। गुजरात का बहुत अच्छे से चला, आज तक शायद चल रहा है बहुत अच्छे से। दिल्ली का हमने चलाया और बहुत कामयाबी भी हुई, बहुत मुश्किल भी था, और एक पॉइंट पे करीब 5 साल, करीब 99-2000 तक पूरे हमारे जो लेख हैं वो मुझे लगता है काफी मिसाल है कि किस तरह के लेख छपे और कितनी मान्यता मिली कि हाँ, डेवलपमेंटल इश्यूज को गहराई में जाकर छापना चाहिए। चरखा में 99 या 2000 तक ही रही और बहुत इन्वॉल्व रही। फिर मैंने इसको सौंप दिया एक तरह से, और जब सौंप दिया तो मैं इससे बहुत जुड़ी नहीं रही, क्योंकि और बहुत बढ़िया लोग इसको देख रहे थे। शंकर दा खुद देख रहे थे, संजय के पिताजी, सुमिता भी
इन्वॉल्व थी बोर्ड में, शायद थी विजया दी इन्वॉल्व थी, संजय की माँ। तो मुझे लगा कि मेरे और कुछ काम जो मैं करना चाहती हूँ बहुत, और जो साइड पे कुछ पढ़ाना भी, कुछ लिखना भी, तो मैं 2000 के बाद का सादा नहीं कह पाऊंगी, और मुझे कहना भी नहीं चाहिए, जो लोग जुड़े रहे हैं उनको कहना चाहिए। बीच बीच में मैं जैसे दिसंबर 7 को जरूर मिलती थी, कुछ कुछ बीच बीच में साथ करना। मुझे लगता है कि बस ये प्रश्न आप लोग के बीच, दिस क्वेश्चन दैट देयर इज अ लेगेसी, एज अंशुल जस्ट सेड, एंड मैंने सबने कहा कि एक धरोहर है, एक लेगेसी है, इसको कायम हम कैसे रखें। और आज के माहौल में, और इस 25 साल हो गए हैं, इस अरसे में पूरा माहौल भी बदला है और कई तरह से और खतरनाक हुआ है। तो मीडिया का माहौल अगर सिर्फ देखें तो मीडिया एकदम कॉर्पोरेटाइज हो गया है। उस समय जितना स्पेस हमको बहुत मुश्किल से मिलता था वो भी नहीं मिलता। फ्रीलांसर्स को अब एक्सेप्टेंस कम से कम एकदम हो गई है। तो एक्सपर्ट्स को वो कह सकते हैं आप लिखिए खास मुद्दे पे, पर हम जाके कहें कि ये आर्टिकल आना है। तो दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स हैं। उस समय प्रिंट मीडिया था। अब आप जानते हैं, मुझसे अच्छे से जानते हैं, ऑल यू यंग पीपल नो मच बेटर देन मी, कि कितने सारे सोशल मीडिया, कितना डॉक्यूमेंट्रीज, कितना कुछ हम इंटरनेट के द्वारा कर पा रहे हैं। OTT भी है अब तो। अब डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो बहुत बढ़िया और स्थानीय मुद्दों को लेकर बनती हैं, चाहे PSBT की या बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स या और। पर बस एक चीज मुझे जो कमी महसूस होती है कि अलग अलग लोग इनको देखते हैं, जिसका इंटरेस्ट है वो ही देखता है। जो संजय का सोच था वो मुझे आज भी सार्थक लगता है, और एक गैप वहां दिखता है कि इन सब मुद्दों को किस तरह रोज जो अखबार खोलता ही है उस अखबार के में क्यों ना हो। नहीं तो डॉक्यूमेंट्रीज मैं और आप देखेंगे, जिसको देखना चाहिए, जो पावर में बैठा है, वो तो देख ही नहीं रहा है उसको। तो ये समस्या सोशल मीडिया एक तरह का, जो हम कहते हैं एको चेम्बर्स ना, एको चेम्बर्स, एक दूसरे की ही आवाज सुनना, जो एक तरह से पहले से सोचते हैं। ये गैप मुझे बहुत अंदर से खाता है। और गिल्टी फीलिंग तो होनी नहीं चाहिए, पर होती है कि हम जितना जरूरत है समाज को उतना मैं नहीं कर पा रही हूँ, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो चरखा में भी मुझे लगता है कि संजय के गैप से भी जरूर फर्क पड़ा है। मैं नहीं मानती कि हम सब उस तरह से कर पाए। एक तरह से तो हम एकदम शैटर हो गए थे। तो आई थिंक एक कमी वो तो थी ही। पूरा माहौल इतना खतरनाक है तो हम अपने को पूरा ब्लेम ना करें, बहुत मुश्किल काम है ये। पर तो वो गिल्ट वगैरह साइड पे छोड़ के हम क्या कर सकते हैं अभी भी, ये मुझे लगता है वो 1 घंटे आप डिस्कशन में भी करेंगे। तो इस प्रश्न के साथ आपका बहुत धन्यवाद, और ओके बाय। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग। अब मैं अवार्ड से सुनील सर को एंड आरिफ सर को बुलाना चाहूँगी, ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस जॉय सर के साथ उन्होंने जो कार्य किया उसे शेयर करें। सर सुनील आप सर, स्टार्ट करेंगे? सर आप शुरू कर दीजिए। या यू प्लीज स्टार्ट सुनील। ओके, सबको नमस्कार। मैं संजय और सुमिता और सब हम लोग, मैं भी उर्मुल से ही जर्नी शुरू हुई है मेरी। मैं आर्मी में होता था एज अ डॉक्टर, और एक किस्म से फंसा हुआ अपने आप को पाता था, क्योंकि मैं जाके गांव में काम करना चाहता था, क्योंकि गांव पहले देखे नहीं थे। आर्मी के साथ में गांव देखने शुरू किया और जाने अब मन था, मगर उस टाइम NGO क्या होता है ये तो हम जानते ही नहीं थे। और ऐसी चीज की जा सकती है, हमको शायद पिक्चरों का आइडिया था कि जाके गांव में बस जाएंगे, मतलब कुछ बच्चों को पढ़ा देंगे, कुछ बकरी कर लेंगे और खाना पीना तो खिला ही देगा।
इस तरह का वो था। और उसी में एक बार मैं बीकानेर में पोस्टेड था और कुछ झगड़ा हो गया कुछ करप्शन के इशू पे अपने बॉस के साथ में, और मैं चला गया जैसलमेर मरु मेला देखने के लिए। और वहां पर आते जाते देखता था कि वहां एक क्राफ्ट मेला लगा हुआ था और उर्मुल रूरल हेल्थ रिसर्च डेवलपमेंट ट्रस्ट लिखा हुआ था। और समझ में नहीं आया कि ये हेल्थ का ये कपड़ा क्यों बेच रहे हैं, समझ में नहीं आया। और शायद 2-3 दिन के बाद ही हिम्मत हुई और फिर मैं नीचे झुक के वहां बैठ गया और वहां रेखाराम जी बैठे हुए थे और साथ में श्रीधर भी थे। और वहां मालूम चला कि ये कपड़े का क्या ताल्लुक है उसके साथ में, और वो जो बैठे हुए थे वो भी एक MBA निकले। बड़ी मतलब एक मेरे दिमाग में तो एकदम खलल पैदा हुई कि ये क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि ये MBA लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। और शायद तो ये, मगर उसके बाद शायद ये भी दिमाग खुला कि अच्छा ये काम जो है सिर्फ एक गांव में नहीं और कुछ लोगों के लिए नहीं और कुछ बड़े लेवल पे किया जा सकता है। बट उसने भी यही कहा कि आप तो बीकानेर में ही हैं तो वहाँ संजय जी से मिल लीजिएगा। तो संजय जी को मिलने के लिए मैं उर्मुल ट्रस्ट के ऑफिस में पता नहीं कितनी बार गया हूँगा। और वहाँ हर बार एक मुखर्जी साहब होते थे और वो हर समय यही बोलते थे आप आज तो है नहीं, आप बाद में बात कीजिएगा। और उन दिनों कोई ऐसे फोन वोन होते नहीं थे कि आसानी से बात की जा सके। ऐसे ही मैं थोड़ा परेशान भी हो गया था, 6-7 महीने हो गए बार बार चक्कर काटते हुए। और एक दिन एनुअल लीव आने वाली थी और मैंने कहा एक बार जरा देख लेता हूँ छुट्टियों में वहां जा पाऊंगा कि नहीं। तो मैं गया और मैंने सोचा कि अब अगले दिन तो ट्रेन पकड़ के जाना ही था, पूछ लेता हूँ कोई कि अभी भी कोई चांस है वहां जाने का, क्योंकि एक दिमाग में लग गया था कि छुट्टियां तो कम से कम मैं गाँव में कुछ बिता सकता हूँ। एक शायद वहां गया तो ऑफिस बंद हो चुका था। मुझे याद है कि उस टाइम भी शायद PT की वजह गेम्स की ड्रेस पहन के था, शॉर्ट्स में था। और वहां से एक आदमी बाहर निकला और मैंने कहा मुखर्जी साहब होंगे? बोले नहीं, वो तो घर चले गए। तो बोले क्या काम है? मैंने कहा यार परेशान हो गया हूँ, मैं इतने बार आया हूँ, हर बार मुखर्जी साहब टाल देते हैं और कोई एक संजय घोष से मिलना था, तो कब मिलेंगे, क्या करूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रही। तो बोले मैं ही संजय हूँ। फिर मैंने कहानी आगे सुनाई। तो मैंने कहा मैं कब आ सकता हूँ? तो बोले सामान लेके आए हो तो अभी चलो। तो वो एक संजय की जो रेडनेस थी वो हर समय रहती थी और किसी को मतलब मेरे ख्याल से कभी सोचने का मौका नहीं देते थे कि कहीं बदल लेने दिमाग। और ऐसे ही हम मतलब बुरे से नहीं कहूंगा, हम बहुत सारे लोगों को फांसा उसने। जो इस यात्रा पे साथ में निकले हैं वो उस रेडीनेस के साथ में थे, क्योंकि वो कभी ये नहीं समझते थे कि कोई नहीं कर सकता है काम। और फिर मैं छुट्टियों में आया जाया करता था, हर छुट्टियों में वहां जाता था। जब बीकानेर में था तो सैटरडे संडे जाता ही था। तो उस टाइम में भी मुझे याद है कि एक बार हम कहीं जा रहे थे और हाँ उनके से एक आदत थी, अगर बोलेंगे सुनील चलोगे कल, और मैं बोलता हूँ चलो चलते हैं। कितने बजे से निकले? बोला आराम से 5 बजे सुबह। क्योंकि 5 बजे सुबह संजय के लिए आराम होता था, शायद हम लोगों के लिए हराम होता हो, बट वो रात में जल्दी सो जाएं और सुबह सवेरे उठते थे और निकल जाते थे। और क्योंकि पता नहीं और लोगों ने बताया कि नहीं, दिन में केवल एक बार खाते थे तो सुबह तो खाने का था ही नहीं। बड़ी मुश्किल से उनको याद आता था कि इसको ब्रेकफास्ट भी चाहिए होगा। तो ये हाँ, वो उसके साथ मुझे लगता था कई बार कि बोलते थे मुझे पछता नहीं है, मुझे लगता है कि वो बताने के लिए था और कोशिश यही थी कि कहीं टाइम वेस्ट ना हो जाए, दिन में एक बार खा लें तो चल जाएगा। तो इट वाज वेरी डायनेमिक। और शायद मालूम नहीं मुझे आगे मतलब, क्योंकि मैं तो बाद में जुड़ा यहाँ पर लोगों ने क्या बताया। आई थिंक ही हैड नेवर कम सेकंड इन हिज लाइफ। हर जगह जहाँ जाते थे तो शायद नंबर 1 दर्जे पे ही होते थे। और वही मतलब मुझे दिखा कि बहुत बार हम लोग मतलब काम तो करते हैं, बट बहुत कई बार इंटेलिजेंस वाले लोग जो हैं जिनका IQ बहुत होता है वो कम मिलते हैं। बट एक बार मैंने ऐसा कुछ बोल दिया था, कुछ मुझे याद है कि पॉलिटिशियंस के ऊपर कुछ बोल दिया था कि देखिए मतलब जो ऐसे घूमता रहता है ना, जैसे आजकल व्हाट्सएप पे घूमता है, तो उस टाइम भी ये कहीं सुना था हमने कि जो अच्छे रैंकिंग वाले लड़के लोग लड़के लड़कियां होते हैं वो तो सब डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, और सबसे जो फेल होने वाले होते हैं वो तो पॉलिटिक्स में घुसते हैं। बट उन्होंने तुरंत मुझे रोका, मुझे याद है कि बोले कि नहीं, वो IQ सिर्फ से कुछ नहीं होता है और इसमें EQ जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। और ये भी मत समझना कि वो लोग बुद्धू हैं। तो पॉलिटिक्स में जाने वाले लोग भी अपने हिसाब से बहुत ही अक्लमंद होते हैं और उनका लोगों के साथ बहुत कनेक्ट होता है। तो कभी ये दिमाग में मत रखना कि अक्लमंद लोग ही डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। उन दिनों IT नहीं था। और ये कुछ-कुछ चीज़ें मुझे जो एकदम यहाँ तो उस टाइम एक और बार जब गाड़ी में जा रहे थे तो अचानक पूछते हैं कि भाई सुनील तुम यहाँ आते तो हो, मगर तुम्हारा असली मकसद क्या है?
क्या करना चाहते हो तुम? मैंने कहा फौज छोड़ेगी तो जाऊंगा, नॉर्थ ईस्ट में काम करना चाहता हूँ। तो याद है कि एकदम साइड पे लगाई गाड़ी, ब्रेक मारी और हाथ मिलाया और बोला कि शेख यार मैंने भी वही जाना है काम करने के लिए। थोड़ी कट, मतलब वहां पर इतना आसान नहीं होगा काम करने का, तो ट्रेनिंग मेरी अपनी राजस्थान में कर रहा हूँ। मैंने कहा तो कब जाने का इरादा है? तो कहा कि चलोगे, एक साथ चलते हैं, 10 साल मेरे यहाँ पूरे हो जाए तो चलते हैं। और मैंने कहा इंशाल्लाह अगर मैं छूट गया आर्मी से तो साथ चलेंगे। और किस्मत ऐसी रही कि फिर 94 में मैं भी छूट गया था और तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था जाने के लिए। तो मुझे याद है कि जो ही वो नॉर्थ ईस्ट घूमना शुरू किया किसी न किसी वजह से, और मैंने फुल टाइम, मैंने कहा कि कम से कम हाथ पूरे टाइम घूमने करने चाहिए, तो मैंने उर्मुल ज्वाइन कर लिया था 1 डेढ़ साल के लिए फुल टाइम। और उस टाइम हर हफ्ते वहां से नॉर्थ ईस्ट से पक्का एक चिट्ठी लिखेंगे, और उसका हर समय स्टार्ट होता था, मतलब चिट्ठी क्या, मतलब पोस्ट कार्ड आते थे उनके, डियर पार्टनर करके आते थे। और बहुत अच्छा लगता था कि वो पूरी वहाँ की जर्नी जितनी थी, बहुत लाइव जर्नी जैसी, वो एक पोस्ट कार्ड के अंदर समा देते थे। और एवरीबडी सेड ही वाज अ वेरी गुड राइटर एज वेल। और कम्युनिकेशन पे मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि चरखा, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी मिस हुई कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग नहीं उसको फैला पाए। वो खुद ही नहीं लिखते थे कि हम लोगों को भी प्रेरित करते थे कि लिखने के लिए। और मैं हल्का सा डाइवर्ट कर रहा हूँ, मगर दीप्ति ने सामने बैठी तो मुझे याद आया कि उस टाइम से ही राजस्थान का ही एक टीवी के ऊपर मैंने कुछ आर्टिकल लिखा था, और 800 रुपये मिले थे शायद पहली बार लिखने के लिए, कुछ पैसे मिले थे। तो उसकी बात आई गई होगी। और नॉर्थ ईस्ट में जब आए तो पहली बार तो हमने लिखा, मगर दूसरी बार हमको लगा था, जब मैं दोबारा हमने दी एंड करके संस्था बनाई, और तो हम लोगों ने अपने ऊपर मॉरिटोरियम रखा था कि पहले 5 साल हम कोई लेख नहीं लिखेंगे, किसी पत्रकार को हम लोग इंटरव्यू नहीं देंगे, क्योंकि लग रहा था कि पिछली बार हम जरूरत से ज्यादा मीडिया में आ गए थे, और इस वजह से हम लोग चाहते थे कि बहुत सबटेरियन लेवल पे काम करें। और जब तक हम लोग बड़े हों और कुछ काम कर पाए, तब तक किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि हम क्या, मतलब एक किस्म का सबवर्जन होता है हमारे काम में। और इसलिए तो आई थिंक 10-12 साल बाद, उसके 2007-8 की बात होगी, कि मैं दिल्ली में ही कभी एक क्या है, गोल मार्केट के इलाके में मैं मिठाई खरीदने गया था, और अचानक एक जने मिले, और मतलब मेरी ओर देखते रहे बड़ी देर तक। अजीब लगा। फिर थोड़ी देर में बोलते हैं, आप सुनील कौल हैं? मैंने कहा हाँ। सॉरी, मैंने नहीं पहचाना आपको। बोले मैं डॉक्टर जैन हूँ। अच्छा अच्छा, वो टीवी वाले? बोले हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, आप कहाँ हैं? कहता कहाँ है, तुमने तो कहीं का छोड़ा ही नहीं मुझे। ऐसा क्या हुआ? नहीं, आपका लेख मैंने पढ़ा था वो टीवी के ऊपर। मैं एकदम थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया, और आपने हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा था। मैंने कहा हाँ, आपकी वजह से मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा ऐसा? मैंने कहा मैं तो किसी का नाम भी नहीं लिखा होगा, मैंने कुछ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। नहीं नहीं, मैं समझ गया था, उसमें हिंट काफी होता है अक्लमंद आदमी के लिए। मुझे समझ में आया कि मैंने जो काम किया है वो पूरा टीबी के जर्म के ऊपर काम किया है, टीबी के लोगों को मैंने फायदा नहीं पहुंचाया है, और इसलिए मैंने नौकरी छोड़ के अब मैंने एक एनजीओ खड़ा किया है, और उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो ये जो मीडिया के साथ एक काम करना, और हर समय दीप्ति भी बोलती थी, और उनका था कि एक ह्यूमन स्टोरी साथ में जुड़ी रहनी चाहिए, कम से कम वो कहीं पर भी एक इंसान, दो इंसान की अगर स्टोरी साथ में नहीं जुड़ती हो, तो दिल के तार तक जुड़ती नहीं, तो वो जरूर जोड़ना है। और आई थिंक वो भी हमें याद रखना चाहिए, और बहुत जरूरी एक है। और मुझे लगता है मैंने वो मिस किया है कि वो पहले 5 साल जो हमने लिखने का डिसिप्लिन रखा नहीं, वो बाद तक भी रहा, और तब तक शायद मीडिया भी इतना करप्ट हो गया था कि अब लिखने का मन ही नहीं होता। तो ये एक हमारे में कमी रहती है कि हम लोग मीडिया का पावर नहीं समझते हैं। शायद अब सोशल मीडिया ही सही, मगर हमें करते रहना चाहिए। एक और है कि यहाँ पर बात करते करते मुझे लगता है कि कई बार वो लीडर, और एक कैरिस्मेटिक लीडर थे ही, बट वो कई बार एक भगवान जैसा रूप जैसा बहुत लोग मान लेते हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो जब साथ में हम जुड़ के काम करते थे और एक साथ बैठते थे, तो लगता था कितना एक, मतलब ही वॉज वेरी ह्यूमेन एंड ह्यूमन। वो दूर से शायद दिखने में वो भगवान होता हो, बट वो, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक ही कुड कनेक्ट सो मेनी ऑफ अस। और मुझे याद है कि एक बार मैं उनके साथ में उर्मुल के ही, मतलब गाँव में गया था बीकानेर के, और वहां पर बोल रहे थे कि मैं इस गांव में यार 3-4 साल हो गए, तुम्हें जाना ही है, तो तुम जा रहे हो तो मैं साथ में चलता हूँ। तो वहां गए, और अचानक किसी के घर में घुसे, और मैं दंग रह गया कि उसने उस घर के अंदर जब बात किया उनसे,
तो फट से उनके बच्चे का नाम भी लिया और उनके दादाजी का नाम भी लिया, दादा दादी का नाम भी लिया और नाम से पूछा कि उनके कैसे हैं। मैं बाहर निकला, मैंने कहा संजय तुम्हें नाम कैसे याद रह जाते हैं यार? और दैट्स माय जॉब। मैंने कहा नहीं यार बड़ी अच्छी, मतलब आई फील यू वेरी लकी। ही सेड लक का कुछ नहीं है यार, आई वर्कड ऑन इट। एंड इसी तरह कोर्सेज आल्सो दीस डेज टू मेमोराइज, बट आई थिंक ये मेरा जॉब है कि मैं इंसानों से कनेक्ट कर सकूं, तो मैंने इसके ऊपर मैंने काफी टाइम दिया है। और आई स्टिल रिग्रेट कि मैंने टाइम नहीं दिया उसको, क्योंकि आज भी कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। बट आई थिंक वो भी, अगर आप बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो शायद मैं तो अब बूढ़ा हो गया और बदली करनी, अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, पर आप लोग यंग हैं तो ये याद रखना है कि इसके ऊपर काम करना चाहिए। बिकॉज नाम एक बार जब जुड़ जाता है ना तो बहुत कनेक्ट होते हैं। भाषा और नाम, पहले रामेश्वर ने भी कहा कि वो जो भाषा सीखते थे और बड़ी गाढ़ी भाषा सीखी थी, गूढ़ भाषा सीख ली थी, उससे बहुत अच्छा कनेक्शन बैठता है लोगों के साथ में। ह्यूमननेस के अंदर एक बार कुछ था, मुझे याद आ रहा था कि मैं थोड़ा सा विचलित जैसा भी था कि गांव के अंदर बड़े हम लोग रोमांटिक तरीके से सोचते थे गांव में ऐसा होता है, गांव में वैसे ही गंदगी और ओछापन और सब कुछ वहां पर भी दिखता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। वो जब दिख रहा था तो मैं थोड़ा परेशान सा था और मैंने काफी कुछ बोलने लग गया। तो कुछ बोलते वो पीएलयू कॉन्सेप्ट है ना, बस वही। फिर थोड़ी देर बोला यार वो पीएलयू कॉन्सेप्ट है ना। फाइनली मुझे लग रहा था थोड़ी देर में वो इतनी आसानी से पीएलयू कॉन्सेप्ट बोल रहे थे कि मुझे लग रहा था कि तो मुझे मालूम होना ही नहीं चाहिए, मैं कैसे दिखाऊं कि मुझे नहीं मालूम है। आखिर में मैंने बोला यार ये पीएलयू कॉन्सेप्ट क्या होता है यार, तुम तो इतनी आसानी से बोल रहे हो, होता क्या है पीएलयू कॉन्सेप्ट? पीपल लाइक अस, हम सब में वो बुराइयां हैं। ये मान के चलना कि दूसरे की बुराई मुझ में भी है और शायद मेरी अच्छाई दूसरों में भी है, ये कनेक्ट जब तक हम नहीं करते हैं या इसको हम लोग बेस पे नहीं रखते हैं तो दूसरे के साथ हम स्ट्रैटेजी भी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आप सबसे अच्छा अपने आप को समझ सकते हो, है ना? अगर ये समझते हो कि मैं अच्छा हूं और तो दूसरे में भी अच्छाई छुपी हुई है तो उसकी अच्छाई निकाल सकते हैं हम लोग। और दूसरे की बुराई है, दूसरे में बुराई है तो वो मेरे में अंदर भी होगी, और जब टटोलते हैं तो फिर एक स्ट्रैटेजी समझ में आती है कि उस बुराई से कैसे काबू में किया जाए। I think those are the things which I can remember very well about it. और कुछ लोग जो शायद ये नहीं जानते कि he was very political, and मैंने भी वो जरूर सीखा कि लोग जब बोलते हैं आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मैं आज खुल के बोलता हूँ कि जी बिल्कुल, हम ये काम कर ही नहीं सकते जब हमारी पॉलिटिक्स ना हो, और हम पॉलिटिक्स में नहीं होंगे तो फायदा ही नहीं है। शायद हम चुनाव वाली राजनीति में ना हो, मगर हम गरीब की पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल हैं, और गरीबी जिस पॉलिटिक्स से होती है उसके खिलाफ तुम्हें बात करनी पड़ेगी। तो उस टाइम में मुझे याद है कि ये मुझे मालूम नहीं कि बाकी साथियों को मालूम है कि नहीं, एक दिन मुझे बोले कि 6 तारीख आ रही है, अखबारों का तो हंगामा सुन रहे हो ना, छुट्टी पे हैं, छुट्टी पे हो तुम भी, चलते हैं। मैंने कहा कहाँ? राम जन्मभूमि में। उन दिनों वो पूरी ईंटें इकट्ठी हो रही थी और जाने के लिए, और संजय ने पूरा मन बना लिया था। मैंने कहा यार मैं अभी भी आर्मी में हूँ, मैं नहीं छोड़ के जा सकता हूँ, गदर हो जाएगा। बट वो कि इस पे कुछ करना ही है, और वो कनेक्ट, मतलब इवन लोकल लेवल पर खड़े हो के उस टाइम हम लोगों ने काफी विरोध किया था। 92, 93, 94 तक भी उसमें काफी हम लोग विरोध करते रहे राजस्थान में गांव-गांव के लेवल पर। और मुझे याद है कि वहां के एक दिन कुछ हो गया था संस्था के अंदर भी, बट वो बीजेपी वाले लोग भी वहां आए, हमारे घर के अंदर आए, कैंपस के अंदर में, और बड़ी मगर इज्जत से बात की, क्योंकि समझते थे कि ये की विचारधारा हो सकती है, मगर ये कहीं हमारे खिलाफ एक किस्म से हमको तिरस्कार या मतलब एक ओछी नजर से नहीं देखते हैं। तो एक इज्जत रखना और उनके साथ बात करना, वो भी शायद उर्मुल के अंदर बना रहा, जिससे कि लोग उसको एक अनुष्ठानिक हिसाब से उसको एक रिस्पेक्ट देते रहे हैं। और आज अरविंद हमारे बीच नहीं है, बट वो एक उत्तराधिकारी चुनना और वो सब में भी आई थिंक संजय बहुत सब दिमाग लगाते थे कि कौन होगा जो उस इलाके का नेता बन सकेगा और सबको साथ में लेके चल सकेगा। आई थिंक दैट्स वेयर आई एंड। या देयर आर वेरी गुड मोमेंट्स, बहुत सारे मोमेंट्स हैं, टाइम भी नहीं है, औरों को मौका देता हूँ बात करने। थैंक यू। Sir, I would like to call Arif sir.
Sir, Yes. please. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much for organizing this and inviting me for this. And it's a great privilege to talk about my guru, which is Sanjoy Ghose. And I'm sorry, I am not very good at either English or in Hindi, but I will try to manage in both the languages in whichever way possible. So I actually came to in contact with Sanjay when I was a student of um, doctoral student of Divrugarh University after completing my MTech in applied geology. Sanjay and Sunil they went to my university and seek support for riverbank erosion prevention work in Majuli, and that's how I came to work with the team, AVARD any team. And when I came there, it was very interesting for me because I found some very good English speaking handsome people and riding in a bicycle, moving around the island and working. And generally in Assam means we had some inclination for people who speaks English at that point of time. Now means lots of people speak English. And secondly means when I discussed with them and I found they are so all of them, Sunil, Sanjayda, Sumita Di, Jenny, Ritu, David, all these people who were already working in AVARD ANI were so knowledgeable, so good, and so cooperative, so accommodative. It was amazing for me, and I started working with Sanjay Da and the team, and I have learned so many things, and I entered, my motivation and work for the under my career had changed from meeting Sanjay Da. I fondly call him Sanjay Da, and he actually guided me how to make an assemblage of technology with the society. Means my previous work was mostly on the technology sector, and the entire technological work was basically for the technology sake, but it has very little connection with the society. And he taught me how to bring that technological work for the benefit of the society working in the Majuli River Island. With his support means we were devising some low cost technique for the riverbank erosion prevention work, and we were interacting with diverse experts. We were working with biologists. We were working with civil engineers. We were working with geologists. Professor Sushil Goswami was my supervisor at that time for my doctoral research. He was also there, and we all have a different dimension of working at that time. And along with that, I also had the opportunity to interact with various other works. Actually, at that point of time, Sanjay Da was working in two levels. One was in the micro level, he was working in the river island Majuli, and in the macro level, he was also trying to create a platform, a development platform for the groups, various organizations, like-minded people of the northeastern states. So he formulated something called Vikas Kebang, which was mentioned in the earlier in the first half of the day today. So I was associated with all those works, and he was guiding me how to interact with people, how to be with people, how to not to work for people but work with people. I still remember that he told me that, see, when you do the work for people, then you will be keeping yourself away from the people, and when you do the work with people, you are a part of those people and you get connected with them. So this was I don't know, means I just worked for a very brief period, only 1.5 years or half years. That was a very crucial time, of course, because after that
when I was working, Sanjay Da was adopted by ULFA. And we're and at that time, I remember we had a discussion with Sanjay Da about Alpha. Many forums we had discussions, and many personal times we were talking about Alpha. But he was having an opinion that Alpha, all the people of Alpha are highly committed for the nation, for the country, for the people. And only the wrong is that they are believing in the violence, and we are believing in the non-violence. The goal is same, perhaps, and unfortunately, it has proved wrong later on, because we found that ULFA was nowhere committed for the people, because they were a part of the nexus with whom we were fighting. The nexus of the politicians, corrupt bureaucrats, and the contractors, and we couldn't even imagine that ULFA was a part of that nexus as well. And that nexus has created the disaster. Perhaps we have failed to understand that ULFA was a part of that nexus, but perhaps we would have a different strategy if we would have known that. At least I didn't know. And that was the time, means I learned about the society, interacted with society, and I had a background of doing drama. That's why I was associated with various kind of stages in different parts of the state, and I knew the rural community on that line. But after joining Sanjay Da and the team, and I have started learning people on the development perspective also, and interacted with them in different forms. I remember I just would like to tell two things of my experience with Sanjay Da. One is that early morning, as Sunil said, that Sanjay Da gets up very early in the morning. Yes, he gets up very early in the morning, and I was a late riser. And when I got up that day, means I was getting up much earlier than others, but not before Sanjay Da, of course. And I went to the outside of the place where we were staying in Kamlabadi in Majuli, and I found this, IRMA topper, then the Oxford University topper, the John Hopkins University topper is sitting down near a tea well and washing the dishes that we had dumped in the yesterday in the last dinner. So it was the kind of simplicity, the humbleness, and the kind of person he was. It was very impressive. And in many times I used to go with him cycling for different meetings, and these are the times that I really enjoy Sanjay Da's companion and learn a lot from him. I have various kind of discussions. Apart from teaching teaching various developmental work, he also teased me a lot. He always teach me for various things, for talking to a specific girl, or writing some letters to somebody. He always make fun of us very fondly and very friendly, and it was amazing time. And another second thing that I would like to mention, that we always that time there was no mobile phone, there was no internet or anything, but we have some idea that Sanjay Da will be coming on such and such date to Majuli. So on those dates, lots of people would come to our office to meet Sanjay Da. And surprisingly, from the morning, means when Sanjay Da reaches the Majuli River Island ferry ghat, at that time only the dogs around Majuli Kamlabadi township come and stand in front of our office. There are lots of people and lots of dogs. We couldn't figure out that how these dogs understand that Sanjay Da is coming. And the kind of relationship Sanjay Da had with the dogs is also amazing. The dogs will jump on him and pull his pajama, and he always buy
biscuits for them. And I remember one dog was having some problem on his skin, and he has taken that doggy to the local hospital and cured him. And he got all his skin disease. This doggy got skin disease, cured. So these are all small things which were educating me a lot in his entire time. Means even today, means when I do some work for the society and when I think of something, I always try to remember, or always I try to think how Sanjay would have reacted in these situations, and I try to react that way. So he was an idol for me for my entire work, and it was amazing means how I have learned from him, and I'm working. I'm always trying to work the way he would have guided me if he would have alive around us. Thank you so much. That's it. Thank you, Sunil sir. Thank you, Arif sir, for sharing such a beautiful memories and experiences of Joy sir. हम सभी बहुत प्रभावित है कि आज भी उर्मुल ट्रस्ट, उर्मुल सेतु, उर्मुल समिति और सभी दूसरी संस्थाएं जॉय सर के सिद्धांतों को मानते हुए काम कर रहे हैं। जॉय सर का प्रभाव आपकी संस्थानों के साथ साथ हम IRMA के स्टूडेंट में भी बिल्कुल कम नहीं हुआ है। ऐसा बहुत कुछ है जो हम जॉय सर के जीवन से सीख सकते हैं। अपने मूल सिद्धांतों से जुड़ के रहना, सामूहिक कार्य करना, सामूहिक कार्य करते भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उनकी जो लगन है, कुछ ऐसी ही चीजें जो हम सभी को अपने जीवन में सीखनी चाहिए। आप सबके द्वारा हमने जॉय सर के जीवन का एक अलग ही हिस्सा देखा है, और इसके लिए मैं अपने पूरे IRMA परिवार की तरफ से आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू एवरीवन। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Moving forward, we have our very own Preeti Priya ma'am and Mohammad Rafi sir and Shubham Garg sir. So I would now request Preeti Priya ma'am to please take over the spotlight and carry the event forward. Preeti Priya ma'am, please. Yeah. Thank you, Piyush. We are meeting for the first time. Thank you so much for inviting me to be part of this. I have been, I'll tell you, like since today morning in my house, even YouTube live streaming is going on. I want my children also to listen to all these talks about Sanjoy. See, I belong to that unfortunate group of IRMAs who could not get an opportunity to interact with him personally. See, when we applied for IRMA, it was the year 1997, when my first introduction to IRMA and Sanjoy both came simultaneously. And it was the news about the unfortunate incident about abduction of Sanjoy. So that was like 23 years back, the first time, and I got to know about him. Then when I joined IRMA as a faculty member, as part of my induction at IRMA, at IRMA as a faculty member, I was given a book called Sanjoy's Assam. And also there was another book on another alum of ours, Una Singh. Right, so Sanjoy's Assam, again, Sanjoy comes back in life with his book. And as Sunilji was talking about that he was a great writer, so the book also has a lot of diary pages of Sanjoy when he wrote about Assam. So when I started working at IRMA, I also, having two little daughters with me, so I was a frequent one to meet Dr. Balchandani. And so I used to converse with him a lot, and also it's important, you people have not yet visited the campus. You'll find Dr. Balchandani when he comes in the afternoon, his wife accompanies him. So I also used to have a good conversation with them. And then with Dr. Balchandani, through him, again, Sanjoy came in our life, and I got to know about him through his lenses. Like Dr. Balchandani had already
the family had packed their bags to move with Sanjoy to join him in Rajasthan. But something happened, and then he was engaged with the Nagar Panchayat hospital, and he continued there. And then it's like in 2011, when I was handling placements for the batch 30, and so then I happened to meet his batchmate, then NAFIN's MD, Mr. C.P. Mohan. And then again, the idea of joy came into. So then that was where it's like I actually got a very close view about how Sanjoy was from his batchmate. So how he was when he was studying here and what he was doing, etc. And then also it doesn't stop then. Then we get a fellow in our FPRM program who is Ajit Chaudhary, again an airman, who's now working with Tata Sons. So he had joined Sanjoy in Rajasthan. So there is there is also a short script written by Ajit on which is available in Sanjoy Assam. So then some of us would sit with Ajit and would like to know more about him. So that is, and then in 2012, my husband being with ONGC, he was transferred to Assam. And he was posted in an area which is near to Majuli, a place called Borhola. I was then listening to RF sir. So there, my husband Praveen, being what he is, he started using bicycle to go to his oil rigs from the bunkhouses that he was, and then he was interacting with Assam people in the rural areas where he was there, and he came across, I think many of you would also know that after the Zulfa and all, there were many who were then inducted by government, who were mainstreamed into, so some of them had also joined ONGC. So my husband also happened to kind of get in touch with those people because they were also working. So with this idea that, okay, you are coming from Anand, and then yes, and now we stay in IRMA campus, etc. So that's how, like, then again, the story of Sanjoy came in. Now it was still then, it was in my life, but it then came in our life. So when for the 14 days when he would come back to Anand, he would say, please give me the book Sanjoy's Assam, I want to read. And he started reading. So then it's like we were doing the common book reading in the house. So that has been a lot of, I think, a lot of things that I also, today I heard about, like now typically like the people like us, the idea of inclusion was the idea of joy. Embracing diversity was his idea. Or always, like now if you remember, like Anshul was talking about, Anshul Ocha was talking about democracy. That how in our daily life, we live democracy is very important. So we may not always be working in the areas where Sanjoy was working or the grassroots development workers work, but yes, in whatever little way, how we can work on our, as you will also know that I'm very fond of poetry, so I keep reading poetry. So I strongly believe that kavitaon mein jadoo hota hai. And then whatever little and the breadth and depth of Sanjoy that I got to know from variety of sources as I've been talking about, I also came across the poet Pash, whose original name is Avtar Singh Sandhu. If you people know, he was also assassinated by Khalistan extremists in 1988 when he was just 38 years old. Some kind of, and he has like he has written some poems like Beach Ka Rasta Nahi Hota, but the most popular poetry by him was Sabse Khatarnak, which is also, I think some of you would have read in your class 11th textbook, where I would just try to kind of bring in few lines from there, which I personally felt that yes, this is what to me Joy tried to tell,
So I have been a very unfortunate person who has not really worked with the grassroots at the grassroots level, except for my VFS and MTS, which I did with during my IRMA time. But I see that, yes, that is very, so what he says in his poetry, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना. हाँ, सबसे खतरनाक, I'm just taking out few lines from that, not the entire poem, but which has actually stayed with me, and I always associate these lines with the idea of joy, and also the idea of a lot of Irmans who have been passionately working in the development sector. सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन को ही भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलट फेर में खो जाती है. सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाती है. सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए. मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी भी सबसे खतरनाक नहीं होती. सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना. And I felt that Joy never allowed his dreams to die. And the institutions that he built around, they are still continuing. आज जब मैं सुन रही थी सभी लोगों की बातें तो मुझे लग रहा था कि जॉय जैसे लोग थोड़े होते हैं, बट जो होते हैं उनकी छाप बहुत लंबे समय तक रहती है. आज हम 23 साल बाद उनको याद, आज के दिन ना उनके गए हुए उनके करीब 23 साल गुजर गए, बट आज भी जो जॉय का विचार है वो आज भी हम सबके बीच उतना ही तरोताजा है जितना जो हमने सुनील जी के माध्यम से या दीप्ति के माध्यम से या अंशुल के माध्यम से सुना. एंड सो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी. आपने ऑलरेडी 2 इरमन्स को इनवाइट किया हुआ है और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक यू हैव इनवाइटेड मोहम्मद रफी एंड यू हैव इनवाइटेड शुभम गर्ग. So Rafi happens to be my batchmate from the same year. We belong to the same batch, 98-2000, PRM 19. So PRM 19 एक वो खास बैच, एक अलग सी वो बात थी उस जॉय के संदर्भ में. हममें से कई लोग इरमा की तरफ प्रेरित हुए थे संजॉय के अपहरण की घटना का समाचार पढ़कर, और हम में से कई लोगों ने उस वक्त जब अप्लाई किया था हम और भी ज्यादा जानना चाहते थे. हम जानना चाहते थे हम किस तरीके से, हम में से कई लोग कैसे काम बढ़ा सकते हैं. और शुभम belongs to the batch PRM 35. I also happen to have taught him. He also belongs to a batch when we had to, under the pressure of the regulatory framework, the AICT and all, we had to move to CAT as an examination through which we would be shortlisting the candidates. And I must share with you that at IRMA it was a very we all were quite scared that because the CAT aspirants were not necessarily IRMA aspirants, but some of us used to also believe in that we also had Joy who had left IIMs and had joined. So then also it's like, but I'll tell you, like PRM 35 as a batch was in a way, a lot of them, not only Shubham, many of them are working, they chose to work in the grassroots. Shubham's friend Gaurav is working in, now he started his own startup.
There's one girl, Gigi Visha, who is working with FPOs. So there are many. So even in PRM 38, I see that there are people who are now heading FPOs and have decided to work with farmers, work at the ground level. So I will not take much time, and I would like to introduce Rafi to the audience today. So Rafi has wear a lot of, like, he has what I understand, he's an engineer from NIT Surat, and then he worked with Hitachi. So he was one of those few participants during our time who had come with experience. Otherwise, the large majority were like freshers. So, and then Rafi has, after IRMA also, Rafi has worked with many various brands and in variety of strategic role. So that is but his commitment to ensure a better place for the current and future generations motivated him to work with Rajiv Gandhi Foundation as an advisor on policy issues, which is related to more of socio-technological innovation and future skills. So along with what he is working with the non-tech startup heading diverse greenfield, he's also associated with Rajiv Gandhi Foundation. And what I find that Rafi is working in very difficult terrain. He was in Bastar last month. And he has come up with some policy briefs and papers based on his work that he is doing with them. So I welcome Rafi, a very hearty welcome to you to talk to all of us and share your journey, which has been in a way very, I should say, it has to be converted into a short documentary at least. To know like how you have looked at life, your profession, and how you have. So to be very frank, मैं IRMA में पढ़ रही थी, रफी IRMA जी रहे थे. That's the. Am I right, Rafi, in saying that? Rafi, we are not able to. So much for so Rafi, it's all. Am I audible now, Preeti? Yes, yes. So I was saying. Yeah. I hope I'm audible. To differentiate that मैं IRMA में पढ़ रही थी, रफी IRMA जी रहे थे. Am I right? Absolutely. Over to you. Well, thanks, Preeti, for that lovely introduction. Thank you so much. And I've been part of the discussion since morning whilst I'd logged into my wife's account earlier. Wonderful listening to all the nice memories that people have put across on Sanjoy Ghose. Like anybody else, when I joined in 1998, definitely you look forward to finding out in terms of who the alumni from those institutes are. And to be very honest, good old times, way back in late 90s, IRMA was amongst the top 3 options for anybody aspiring to pursue a management education. Well, apart from the IIMs, I think IRMA definitely used to come into the top 3. I mean, either you made it to the IIMs or you were looking at something more holistic in life, you would definitely look at an IRMA as an option. Well, that's essentially how I was motivated hearing the story of Sanjoy Ghose. 97, I did speak to a few IRMans. I was lucky to have a few IRMans who were working along with me at Hitachi at that point of time. Well, all they said to me was, see, the place is different. I asked them, why did you leave the sector in that case? He says, just experience IRMA, have a look at it. And I'm sure you'll be motivated enough to work further. Well, I also had an interesting past to that because I worked with the Indian Military Academy at Dehradun. I was a gentleman cadet in 1996. I'd left that, I'd come back, and I was wanting to do something that my passions drove me to do. And during my stint at Hitachi, which was called Amtrex during those days, I was fascinated by this entire thing on innovation and new products, whilst also wanted to study management. And with all these stories that were there about IRMans,
some of them like Sanjoy Ghose, definitely pushed me to take up and join IRMA. And I lived my life very well there. I mean, for me, coming from a corporate work life, IRMA was a resort. It was a 2-year holiday. And I'm sure Professor Maitri can vouch on it because I got a D in our strategic issues course. The passion for me to create products which could benefit society at large using technology and so on and so forth was something that motivated me to sort of look at a career, pursue a career in that. And sadly enough, during those days, the only organizations that we had were Amul and NDDB, along with a few more milk organizations who were on campus. And I felt I didn't want to shoot arrows in the dark by choosing to work in the development sector. And I chose to work in the corporate area, wherein I felt I could learn the process of innovation and use it to the betterment of people and the society. And that's how my journey, my second innings with Hitachi began. I started as a product planner. Guess was amongst the only product planners in the country. That was a point when the Japanese had already arrived in India. Subsequently, few more organizations found merit in terms of what I was doing. So I worked with LG in India, and I also worked in Korea for them. I was attached to LG Korea, created products, new products worked across different countries. And the journey began. I mean, worked with multiple companies at Samsung, the Tata Group, Havels. Well, way back in 2017, when I was working with Havels, heading their strategic marketing portfolio, I realized, boss, I started my career off starting to work for the society, to do better for the society. But in the entire corporate race, I realized I had lost that initial passion and the dream, which was what I intended to do. A chance meeting with my current mentor, Mr. Vijay Mahajan, which happened sometime in 2018, got me into Rajiv Gandhi Foundation, wherein he said, see, look, it's just not about development or corporate. So the large mandate that I was given, basically a plain paper, asking me to see as to how we could work on science and technology and create a change using these as interventions for social development. And that's where the journey began. And my last assignment with them, whilst I've written a strategic paper on high-tech manufacturing industries in the semiconductor area, having seen as to how India has missed the bus on semiconductors, I also work on the other side, wherein I spent some time in Bastar recently, trying to see as to how value-added agriculture using natural resources, that's Jal, Jungle, Zameen, and Janwar, can be used to create products, to actually create products, not commodities, for the betterment, for the benefit of people. And that's essentially what I've been trying to work on currently. And it's been a journey. I've been the black sheep as far as IRMA is concerned. But I think the link between joy and perhaps what I'm trying to do is, you've got to dream. You've got to have a dream. I mean, especially for the younger people there, you need to be passionate and follow your passions, irrespective of whatever you do, whether you're working in a corporate sector or a development sector. I see there's nothing different between what they do. Ultimately, it's good work. It's your work that is really appreciated. I would get. And a small message that I thought if Joy were alive today would definitely say is that let us honor, if we can, the vertical man, though we value none but the horizontal one. It's a famous quote from the poet W.H. Auden. And I'm sure Joy would have said it, because I spoke to Mr. Vijay Mahajan in length on his association with Joy. He said, perhaps we value him more when he's not alive. We valued him lesser when he was. I think with that, I would
possibly close this one. So I'm open to questions on that. Thank you, Rafi. I would like to now invite Shubham, and then we can have questions. A lot of questions have already been forwarded to me by students, right? Now we have Shubham Garg from PRM 35. Shubham, as you know, he is heading an organization which is based out of Sabai Madhupur, and they are actually into community-based education. The organization is Gramin Shiksha Kendra. It was founded by two Irmans, Jyotsna and Sachin, way back in 1996. Am I correct, Shubham? Yes, 1996. Yeah, so it was, I think Shubham was someone that I think I have from PRM 35. He's someone with whom I have been in constant touch. I have been able to kind of spend 3-4 days with him in the field of Gramin Shiksha Kendra. And I must tell you that he has been doing the kind of work that he's doing is not, and the decision that he made at that point of time to go and work there is not an easy decision. Though I'm on the other side, but I would say that people like and the participants like Shubham do inspire us at IRMA. To continue with so they are the now the ambassadors of the idea of IRMA, as we got to know, and you'll understand that what Shubham is and the kind of work Shubham and his team has done during this COVID, when for our children and all this online education etc. was there. We are the privileged ones who had we could even go and buy different the device for that. But what happened when to those children in the rural areas and the kind of schools that Shubham organization Gramin Shiksha Kendra runs in 3-4 different schools, 3-4 different villages, are very different, very different. I'm sure many of you would have been be in touch with him or would be knowing about Gramin Shiksha Kendra through their social media handles, and you must have seen when they had gone live with their Bal Sabha, the Pratna Sabha, the assemblies that happen in the beginning of the school day. So I was personally, it was amazing to see. I also have prepared notes, news items for my child to deliver in her school assembly. But when I was there, and I was there with my my younger daughter in Gramin Shiksha Kendra, and we were all amazed when the children started reading out the news, and you wouldn't believe the news was community news. आज ये चाचा ने अपने खेत में इरिगेशन के लिए डीजल पंप खरीदने का प्लान तय किया है। ये भाई ने एक स्मार्टफोन खरीदने की योजना बनाई है। पता नहीं वो योजना सफल होगी या नहीं। और हमारे क्लास के उस बच्चे ने एक नई चप्पल खरीदने की योजना बनाई है। आज जब मैं काफी कुछ लोगों ने जॉय के साथ डायरेक्टली काम किया है और जो बात कर रहे थे लोकलाइजेशन की, I saw that, and I'm sure Shubham would agree with me that during the last almost 5 years that he has been working with Gramin Shiksha Kendra, a lot of learning that we were getting now, the ideas that we got from the entire today's session is something that he's is working on, and always he's investing himself in doing that. Shubham, I won't take much time, and I would request you to share your journey the last 5 years, how, and I would even like you to elaborate a little bit more on that, how you made this decision, the process. I think for the present generation of IRMA, the batches,
your friends, they would be, because at that stage, I'm sure you were also, you had your own decision dilemmas. Today also people have, but how you kind of came out of those dilemmas, that would really help us to know, right? So you please elaborate on that along with what all you have to share with us. Yeah, so thanks a lot, ma'am, and thanks for the lovely introduction, and thank you for inviting me on this forum on this auspicious day. So yeah, so I think I would start from my own journey and how I took the decision of joining the sector. Like many of us, I'm also an engineer by qualification, and I also worked with an IT company after completing my education, completing my engineering course. I worked for 3 years with Infosys, and then and then I started to prepare for MBA entrance exams. I appeared for many college. I tried to get into the many colleges, and IRMA was one of them. Even I wasn't aware about IRMA. One of my friends from the earlier batches of IRMA, Gurpreet Singh, he joined IRMA, and that's how I came to know about the institute. And I was fortunate to get into IRMA, and that actually changed the whole the whole trajectory of my career, I would say. During these 2 wonderful years at IRMA, it actually built my perspective. It actually helped me to understand the communities and the nuances of working with the communities more closely and more clearly. Our batch is not very fortunate to meet legends like Dr. Kurian or Sanjoy sir, but we have heard a lot about these people, and these people have inspired us a lot. And I think when we were kind of when our placement season was going to start, and it was a dilemma for me personally, and I'm sure that many of us were in the same dilemma, that how we wanted to work and develop in space, but there are many constraints, including the salary, including the work culture, including the area where we want to work with. And but I think, and my journey is also, my story is also a very interesting one. I would like to share with you that when our placement was going to start, and I had this dilemma that if I want to join development space or not. When I was doing my third internship in IRMA, I happened to meet the Sachin, who is also the co-founder of Gramin Shiksha Kendra, and he asked me that what kind of job, what kind of organization do you want to join. I mentioned that although I want to join development sector, but money is also one thing that matters, and I genuinely want to join this sector. So he suggested me that I should visit Gramin Shiksha Kendra once. And I visited the organization. I met the team of Gramin Shiksha Kendra, and then it gave me, it was the first step. When I thought that maybe it is worth joining this organization, but again this dilemma came to my mind, and I think 2 or 3 days before our placement was starting, before the zeroth day, I met there was a counseling session by Professor Sunil Handa from IIM Ahmedabad, and he was inviting students who wanted to go into entrepreneurship or do something else, and he was ready to kind of mentor uh, uh, such participants. And but at that point of time, I didn't have any idea, but I thought that maybe I should, I had this dilemma, I should talk to somebody, and I should talk to him. So I went to him, and I shared my dilemma that I want to join this sector, but because it's difficult, because I have to take care of my family, I have to take care of myself, I have to think about my career, think about the future. So he shared, if you are genuinely interested in joining this sector, why don't you go to the organization and spend some time, unless you are sure that if you want to join this or not.
So I did the same. I went back to Savai Madhupur and spent a day with the team of Gramin Shiksha Kendra, and then I made a choice. So this story, when I look back and now I see 5 years of my journey with Gramin Shiksha Kendra, I see that although it was a very small step, but it was a very crucial step in my life. And you know unless we don't take very small steps of these such small steps, I mean we won't be able to kind of cross the threshold that we should. My point is ki, and there are many of the current batches participants who might want to join the development sector, that it's a very small step of courage that one needs to take, uh, and that step makes all the difference. That's what I took, and I feel that the journey was has been full of life. It has been full of learnings. I have come in contact with so many wonderful people, many wonderful mentors from IRMA, from the development space. And when I started to work with a grassroots organization, so I was asked to spend at least 6 months of my initial days in a school, and I was asked to work with the children. And that 6 months period was very important for me, where I not only learned about how to work with the children, but I also learned about the challenges of the parents as well as the teachers. And I think when we I feel that I strongly feel that when we start working in any sector, it is very important to know the nitty-gritties of the grassroots. And these 5 years, these 4 years at Gramin Shiksha Kendra gave me that notion, gave me that picture. They gave me that understanding about the communities that we want to work with. Gramin Shiksha Kendra, as Preeti ma'am said, that we have been working in the education space to improve the quality of education in the public education system. And we also want to create democratic spaces within the communities, within the school premises, where children can have the confidence of speaking out, of expressing themselves, and to be a citizen where they are conscious, where they can they respect each other's opinion. And I think it's very important in today's time as well. So yeah, so I would stop now, and I'll be happy to take on the questions that you may have. Shubham, there are questions like people are interested in knowing, right? Like, yes, we understand that any development program now that needs to start with community engagement. And so typically the participants are interested in knowing from you and Rifi that what kind of advice you would give to them, that how should they improve on these skills to develop better communication to communication to implement their ideas. So how to kind of, what are the the secret gyan for developing that community connect, like in terms of, I think because you spent 6 months initially and you have been working with community, and these communities that you are working, they are actually now they are displaced from the Ranthambore sanctuary, and now they have been there. So it's like, what are the key things that they need to work on, right, to build these skills, right? They see people have the intention, but sometimes because now they are not able to, they fail in connecting. So to develop the rapport, to now develop connect, and I feel that in these days of everything which is instant,
perhaps the patience which is required is like they are saying that how can we reduce the cycle time? Sure. So, ma'am, I would say that patience is very important, and even now I am learning a lot. Whenever I go to the community, I visit them. There's not even a single day when I didn't learn anything from the communities that we work with, and those initial 6 months when I spent time with the government school teachers with the children, I learned a lot. So I think the one key point which is very important for somebody who wants to work in the development sector is to spend some time, is to give yourself time with the communities. It's very important, when we start interacting with the communities, and communities is also a very big knowledge repository. We sometimes believe that we are the people who knows everything, but on the other side, communities also know, and communities are in a better position to know their lives better, right? And they know how what can make their lives better. I would also narrate the history of Gramin Shiksha Kendra, how it was institutionalized in the first place. When you mentioned about Sachin and Josna, when they started, so they came to Ranthambore in the early 1990s, and when they started working with the forest dwelling communities of Ranthambore, it was a eco development livelihood project. And the whole notion and the whole idea of the project was ki how can we reduce the dependency of the forest dwelling communities over the forest. And the idea was to kind of build their strengths and capabilities so that those dependency can be reduced. But over the period of time, and when we had various discussions, Sachin, Josna, and me, and they always say that communities, they know what is good for them, and we should be the one who must spend time with them in order to understand their necessities, their needs, what they want, and what are the best possible alternatives which should be implemented. And our role as rural managers, as development professionals, must be to facilitate that process for them. When Gramin Shiksha Kendra was set up, one of the community members, Kalyanji, who is also in our board currently, he stood up and said that when people like Sachin and Josna, they will go at one point of time, but what will happen to our children? We will again be in the same situation then that we were, we earlier were. So if you want to do something which will bring more sustainability to your efforts, you must do something for our children. You must ensure that our children should not realize those barriers, those walls that we were facing right now. And that actually gave the idea of Gramin Shiksha Kendra, that we must work on the education of the children. We must create citizens who are confident, who are conscious, who believe in coexistence of each other, who believes in, who respects each other's opinions. And that was actually very much important. That remains the philosophy of Gramin Shiksha Kendra, that we must respect opinions of others. We must be we must prepare our children that they should be confident enough to speak up, to express themselves. And the purpose of the school program should be to avail platforms, multiple platforms for the children, where they can explore their skills, they can identify what their interest areas, and pursue those in their career. We should not be the one to say that they should be doctors or engineers or anybody else. They should be ones to take that to take their decisions, and we must kind of facilitate the process of giving them, providing them more and more choices and platforms where they can kind of explore more. And yeah. Rafi, would you like to add here something from your own experience? Well, I think
Shubham has shared what it takes to sort of understand communities. Put it up as see, the fundamental take is it's similar everywhere, whether it's you're working for a corporate organization trying to research your consumers. You just need to listen, learn, and lead. Uh, this goes anywhere. You just got to soak in as much as a sponge, absorb things. And the you've got to be a part of that community. The community needs to welcome you there. And that's the only way possibly that you'll be able to lead them. Right. I think this is something which Joy has been successfully been able to manage to do, living as a part of the communities wherever he's been. I think that's the most important thing. Right, right. Shubham, I think this is more pertinent to you. Another question which is coming, I think this is something which we have been working on and we are struggling ourselves. It's most of the development sector organizations, indeed, 90% of them are underfunded, as they believe. Can you suggest ways of raising funds for them? Ma'am, this is one area where we are, struggling with. We are also exploring various avenues and channels to raise funds, and I would be happy to have more inputs from the audience side. But yeah, I will definitely like to share our own experiences in Gramin Shiksha Kendra. Gramin Shiksha Kendra, when we started, we had nothing. We didn't have any resources at that point of time. I what I've read and what I've heard is the whole development space in 2004 and in late 1990s was also different. There was no CSR at that point of time. There was no corporates intervention in the development space. But now the scenario, the ecosystem has highly changed, and there are many organizations who are doing wonderful work. There are many organizations who are in need of funds, and there are many, every organization is trying out innovative ways of raising funds as per their own capacities. Yeah. So in Gramin Shiksha Kendra, we at one point of time we were also depending on institutional funding, but right now we are also reaching out to individuals. We are also reaching out to people from the corporate sector who are socially conscious, who wants to kind of contribute to the cause like education. For that, we are trying out various ways of communicating, various ways of reaching out to these people. And as an implementing organization, we also feel ourselves accountable to the donors. Not we are accountable to our community, but we are also accountable to the people who are kind of giving money, giving resources for us to continue our operations. And we feel us so that's why we also kind of report to them regularly. We also try to involve them in various ways so that they can also contribute their skills, not only money, to kind of help them improve our work with the community. We also try to sensitize our donors and try to kind of share the challenges that we face with the communities, or the challenges of the communities that we realize or we explore while working with them. So these are the various channels, and we are still trying out to raise funds in different ways. And yeah. Shubham, I think हमारे बीच ना उर्मूल से भी लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी बात कर सकते हैं. जरूर श्योर. बट मैं जानना चाहूंगी शुभम, फंड रेजिंग की तो बात हुई, बट उससे भी जरूरी मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त आप इरमा से ग्रेजुएट हो रहे थे, उस वक्त आपने जो प्रेशर रहा होगा, आपके साथ वाले आईटीसी जा रहे हैं, बिग बास्केट जा रहे हैं ना, बड़े कॉर्पोरेट्स में जा रहे हैं, और आप भी उसी फी स्ट्रक्चर से आ रहे हैं, और शायद घर के भी आपके जो दूसरे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं उनका प्रेशर है. आपका क्या ये डिसीजन, कैसे आप उस तरीके के चैलेंजेस को उस वक्त आप डील कर रहे थे?
मैम इसलिए जैसे मतलब ये भी जानना जरूरी होगा कि क्या आप मतलब हाउ योर फैमिली, आपके परिवार का कैसा सपोर्ट रहा था उस वक्त, तो रादर आज भी ऐसे, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं मुझे मालूम है कि शुभम was offered positions, but he refused, saying that I am committed to the Gramin Shiksha Kendra. I have commitment with this organization, और इस commitment के को बीच में मैं नहीं छोड़ सकता हूँ. ये भी अपने आप में it's a strong decision, right? So ऐसे इस तरीके के जो आपके जीवन में ऐसे जो decisions आते हैं, उसको कैसे आपने हैंडल किया? How had you responded, or how had you kind of sorted out, kind of clean the clutter which are coming from these? मैम मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जो इरमा ज्वाइन करते हैं, इवन फ्रॉम आवर बैचेस ऑल्सो इन PRM 35, आई नो मैनी पीपल, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो डेवलपमेंट सेक्टर ज्वाइन करना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और अदर कंस्ट्रेंट्स वो नहीं ज्वाइन कर पाए. आई फील माई सेल्फ प्रिविलेज्ड इन दैट सेंस कि मेरे जो इक्वेशन जो बननी चाहिए थी फॉर मी टू ज्वाइन डेवलपमेंट सेक्टर, वो इक्वेशन बन गई उस टाइम पे. एक रीज़न उसका ये भी था कि माई फैमिली वॉज सपोर्टिव. एक रीज़न उसका ये भी था कि आई वॉज फॉर्चुनेट टू रिसीव IRMA फेलोशिप अमाउंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट उसके अलावा मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत सारे मतलब इवन फ्रॉम आवर बैच ऑल्सो मैनी ऑफ अस वांटेड टू जॉइन डेवलपमेंट सेक्टर बट कुड नॉट. तो उस तरह का प्रेशर था, हमेशा से था. एंड व्हेन आई लेफ्ट इन्फोसिस इन 2014, मतलब मैं चाहता था कि इस सेक्टर में काम करूंगा, बट उस टाइम पे एक छोटा सा एक स्टेप जो था कि आई विजिटेड ग्रामीण शिक्षा केंद्र. I made that choice of visiting Gramin Shiksha Kendra during the course, and then I tried to convince my family members, और तो उस वजह से मतलब I could join the sector. और जितना इस सेक्टर के अंदर फिर मैं जब when I started working with ग्रामीण शिक्षा केंद्र, तो जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ा उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती गई, और जितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती गई आई स्टार्टेड टू टेक दिस एज अ चैलेंज फॉर माई सेल्फ कि now this is the time to do justice with the kind of opportunities I have got. Getting selected for IRMA, or getting selected for Gramin Shiksha Kendra was an opportunity which was given to me. And now I see that when you start working, when you start working with an organization or a cause, it's your responsibility to do justice with that position, that role, that responsibilities which was entrusted to you by your faculty members, by your institute, or by your board members, or by your team members as well. तो आई थिंक आज भी वो जो एक मोटिवेशनल ड्राइविंग फोर्स मेरे लिए है, वो यही है कि किस तरह से जिस कॉज के लिए, जिस रोल के लिए मुझ पे इतने सारे लोगों ने ट्रस्ट किया, इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, तो आई थिंक आई मस्ट कंटिन्यू टू वर्क इन दिस स्पेस, एक छोटा करके कि थोड़ा कुछ और करते हुए, कि शायद एक टाइम ऐसा आएगा जब आई थिंक जैसा कि हमारे प्रोफेसर हितेश भट्ट अक्सर अपने क्वालिटी मैनेजमेंट कोर्स में कहा करते थे, हाँ, छोटी छोटी बातों से पूर्णता आती है, और पूर्णता कोई छोटी बात नहीं होती है. So as what I understand, Shubham has been trying to say that every small step to be taken in the direction of your dream is very important. One more thing that I wanted to share with everybody, that there are people who were genuinely interested in joining development sector. और मैं देखता हूँ कि जो लोग डेवलपमेंट सेक्टर ज्वाइन नहीं कर पाए, those people were also very supportive to me. Those people are also very supportive to me right now. When I reach out to them asking for any kind of help, they have always offered help.
They have always offered something to me, and I think that is the beauty of being at IRMA or graduated from IRMA, that everybody has that. We always get that sense of helping others, or working for the society. Right. Rafi, are you? Yeah. Rafi, we would like to know from you. You have now you are working in Chhattisgarh in these areas right now. You have been spending time there, right? So what is and you come with a lot of experience from the world of corporate. So I would say it's like when Melinda Gates talked about it, कि यदि Coke हर जगह पहुंच सकता है तो डेवलपमेंट क्यों नहीं पहुंच सकता. So at this stage I would like you to share your experiences. आप वहां क्या देख रहे हैं? आपके फील्ड वर्क, जो पुराने फील्ड वर्क रहे और अभी का जो फील्ड वर्क है, उसके रूरल सोशल सिस्टम, रूरल इकोनॉमिक सिस्टम, रूरल पॉलिटिकल सिस्टम में do you see difference? You also have a long 20-year-old journey after IRMA, where I'm sure as a corporate marketing person, you must have traveled in the field and you must have seen, you have been having this exposure to the rural world. But how do you see now when you are visiting these places? Okay, I think fundamentally, I have been more of a hands-on person. Right. Because sitting in a corporate office, you cannot create strategies without being on field and really understanding what your customers want. Multiple levels of customers भी होते हैं. आपके direct consumers जो potential हो सकते हैं, वो भी होते हैं. Field experiences, आपके user experiences जो है, वो अलग होते हैं. To be very honest, ज़्यादा मुझे फर्क नहीं दिखा. I think एक्सेप्ट कि शायद कॉर्पोरेट लाइफ में ये होता था कि हमें गोल ओरिएंटेड, बहुत ही ज्यादा गोल ओरिएंटेड टाइम हमें कम मिलता था बैठने का, अंडरस्टैंड करने का. द करंट एक्सपोजर इज वेरी वेरी टफ बिकॉज it is very difficult to articulate and synthesize a lot of information because there are multiple issues involved. You're looking at them more from a social wealth angle, you're looking at it from an economic wealth angle, you're looking at things from a community wealth angle. So there are multiple facets to it. And every region perhaps, may have different expectations. There's a lot of heterogeneity. And so when you're recommending a policy or you're recommending a change or an intervention, it needs to take into account the stakeholders who really matter. I mean, that's the way it is. Like take the case of Chhattisgarh. Bastar is very different from the plains of Raipur. Right. The Sarguja area is very different from your so-called Bastar plateau or the plains. So the expectations therefore are very different. So therefore, what one would propose and recommend in Sarguja may be very, very different from what it is in a place like the Raipur plains, Raipur, Bilaspur and Rajnandgaon. I mean, so that's been the challenge. And you're speaking to people at the end of the day. And obviously the role is to seeing as to how the community can be engaged, because we see great community centers everywhere. That's the common observation that I've seen. Is हर जगह community centers तो होते हैं, पर वहाँ पे community नहीं होता है. सरकार तो बना देती है, पर उसे use करने वाला कोई नहीं होता है. Exactly. ठीक है. So there are a lot of challenges, and I sincerely believe in the concept that if an organization needs to be built, if development needs to be done, it needs to be done by the community. We can only facilitate it. The community needs to be involved to create any organization, any institution. That is fundamentally very, very important. It's as similar as saying that the consumers are important to decide what product needs to come out. A similar thing, therefore, is applicable to the community. So therefore, the role of the community, therefore, is something very important.
And I've seen a lot of places जहाँ पे schemes announce कर दिए जाते हैं जहाँ पे community का कोई voice ही नहीं है. Right. So I think I'm a relatively new in the system of the so-called sector, because I fundamentally believe there is no dichotomy between corporate sector or development sector, and I think I've been saying this for the last 20 years. The only difference is perhaps the way we looked at markets traditionally in typical MBA schools. Was a fact of an urban product getting into a rural market. And perhaps with Dr. Kurian's vision, it was more in terms of how a rural product can actually access urban markets. The success story was Amul. And perhaps that's essentially what I would like to tell the young participants. So there are various facets which need to do it. It needs to be marketed. It needs to have an ecosystem for the people to, to work there. So it is a combination of corporate managerial skills as well as the so-called softer development skills. So it's a combination. While development builds the ecosystem, the so-called people who think that marketing is only fanciful position sitting in a corporate office, it doesn't work that way. I think we've seen Amul, we've seen the success of Amul. So it all goes hand in hand. Except that, look at the end person, the end consumer, the end stakeholder is at the rural level. There are multiple institutes, as Dr. Kurian would always tell us. There are multiple institutes which cater to the urban markets. And my dream was to create one that was for the rural markets, and therefore IRMA. And I think as long as that is clear, I think we are good to go. And I hope this entire debate about corporates versus development, the dichotomy, I don't see the dichotomy. I hope that I don't see this dichotomy again. No. And most importantly, simple messages like Joy. I think he was a person who was passionate. I mean, that's fundamental. I think it's in IRMA's inherent DNA. If you meet people, IRMANs, one, they are passionate. The second is that they like to help fellow IRMANs. They're always glad to do that. And third is they're always honest and they maintain a lot of integrity. So these are core things that an IRMAN should possess. I think that's the fundamental construct of IRMA, and that's essentially how we are different. So I've always heard that, कि अच्छा IRMAN है तो झूठ नहीं बोल सकता या गलत नहीं कर सकता. Right. So I think that is a part of our DNA, and as long as we can live by that, I think it's a job well done. Thank you, Rafi. It has been really very enriching, and the way you kind of summarizing that, yes, as IRMANs we stand for integrity, we stand for empathy. These two are very important, along with the honesty, integrity, and empathy are the three pillars on which we make ourselves stand. But most importantly, you need to be passionate. Yeah. Passionate. Yes. I think I'll tell you, like personally, individually, I would give the passion a little bit lower than these honesty, integrity, and empathy. So if these three are there, passion, even if passion is, I'm missing on a bit of passion, I would still hold my identity as an IRMAN strong. Sure. Right. Thank you so much. Thank you so much. I would like to know if there are other questions from you all. Please feel free to ask Shubham and Rafi. No, ma'am, not right now. Okay. Thank you, Shubham. Thank you, Rafi, for being part of this session. And I'm sure the current batch of IRMANs have really been helped by listening to you both. And like you actually, Rafi and Shubham are on the are part of that continuum where we are talking about someone who has who believes that no, there's no dichotomy. The way it's all about people, it's all about passion, and Shubham has been there, so you can
see that a lot of you who would be now going for your internship or who you would be going for your placements, that I think his story is going to help you in terms of dealing with certain dilemmas, how to clear out the clutter. पर एक चीज जो मुझे काफी जितना मेरा इंटरेक्शंस रहा है रिसेंट बैचेस के साथ जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ एज अ फैकल्टी, और जो मैंने भी कई बार इन लोगों की डिसीजन मेकिंग को डिकोड करने की कोशिश की है अपनी तरफ से, ये कैसे ये डिसीजन लेते हैं, जब जनता किसी और तरफ जा रही है ये कैसे एक अलग सा डिसीजन लेते हैं। और उनमें एक बात बहुत उभर कर आती है, जैसे व्हेन यू कम फॉर इंटरव्यूज एट IRMA, when you enter the campus you fall in love with the campus. And I think a lot of being in the campus, knowing the people, now having a not direct exposure to the campus makes your decision very easy. It's the same thing I believe has happened to many graduates like Shubham, that when they met the people in the organization, they directly try to kind of do the exploration of the organization that they wanted to. That I think made them, brought a lot of clarity in them that what exactly they want to do and if the organization that they are trying to explore is the best fit. So it's like, as we say that when we are trying to kind of talk to you during the interviews, typically we are looking for how much we will fit with each other for the 2 years journey that you are going to now. We will be Hamrahis, we'll be Hamsafar, right? So that's what I think is very important. Thank you, Renu, Aditi, Piyush, and Taranpreet for bringing me on board for this. And at last, again, a big thanks to Rafi and Shubham. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. I extend my heartfelt thanks to Sumita Ghose ma'am for gracing us with her presence. It was with your blessings that we begin the journey for this celebration. I thank Professor Shreekant Sambrani, IRMA's first member secretary, and all the alumni who took the time to join us and share their experiences with us. Joyce still lives with us in the form of his legacy, his vision, his strong foundation. His memories are imprinted in our minds strongly, and lessons from his lives are the key to a better tomorrow. Nowhere it is more prominent than in the several organizations and institutes that he created, and we sincerely thank all the people from organizations like Urmul Trust, Urmul Setu, Urmul Seemant, Charkha, AVARD, and Desert Resource Center for joining us today. IRMA फैमिली की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। प्रेरणा मैम, रमेश सरन सर, रामेश्वर सर, सुनील लाहिरी सर, अंशुल ओझा सर, दीप्ति प्रिया मैम, सुनील सर, आरिफ सर, and Purnaramji sir. I also thank Professor Saswat Vishwas, Acting Director IRMA, Professor Nakul Parmeshwar, Chair Alumni Relation, and Preeti Priya ma'am for their support. Finally, I thank Piyush Mahapatra, who is the other half of the Alumni Relation Committee of PRM 41, and with me, and Aditi Mehta and Taranpreet Singh from the Alumni Relation Committee of PRM 40 for coordinating and organizing this session. मैं ये सेशन बस ये कह के खत्म करना चाहूंगी कि जॉय जीवन में आनंद लाते रहे हैं और हमेशा लाते रहेंगे, ना सिर्फ आज पर हमेशा के लिए। थैंक यू। थैंक यू।